Guys, welcome back to Fiqi AMD's Indian International Qualifiers. Well, it is the finals today, so it should be rather fun to see how these teams compete against each other. And remember, for the past 3 days, we have seen these teams compete amongst other groups, and these are the winners from their respective groups. And today they will be facing against each other for a spot in the true international qualifiers, or rather, the true international scrims. So, going against other teams is a lot of fun for me at least. And joining me today is Sigma from Sigma Play. So, Sigma, is it fun for you too to go against international teams? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट भी जाके खेलना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और गाइस, आज हम खेल रहे हैं यहाँ पे फीकी इंटरनेशनल इंडिया क्वालिफायर और ये आज फाइनल्स है। पिछली 3 बार हम लोगों को एबीसी देखने को मिला है, जिसमें कई सारे मैचेस हो चुके हैं। आज इसमें जो आगे बढ़ के आए हैं उन लोगों के साथ यहाँ पे चलने वाला है और आज ये टोटल फाइनल्स है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सभी टीम्स का गेम देखने के लिए, कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि कि जब इंटरनेशनल लेवल का कोई चीज़ होती है तो उसका जो हाइप एंड उसका जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। Right, definitely. And today we have Team 6 is EQ. Fiki, can we just quickly look at who team number 3 is today? Because, guys, for those that don't know, the number 3. This 8. So, please state. So, for those that don't know, number 3 has proven to be extremely lucky for all the teams that have gotten it. So, today it is Beast 8 with that blessing from heavens, from the gods themselves. So, let's see if Beast 8 is able to make use of that luck and they are able to go to the finals. And when I say finals, I mean to the final zone rather unscathed. And let's see if they can get some chicken dinners today, right? Yeah. Since yesterday, I don't know why Team 3 always qualify from this match. I don't know why. Oh, maybe it's just luck. We shall find out. But in the meantime, we will see the flight path go from Vermont and then passing over Mesa, Exhibit Hall, Hilliard, and then finally over to Garrison. So, where do you think people are gonna go from this point, Sigma? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेसा, एग्जिबिट हॉल और मॉल पे लोग ज़्यादा जा सकते हैं। वेल, अगर पास्ट की बात करें तो एग्जिबिट हॉल पे काफ़ी कम लोग जाते हुए दिखाई दिए थे। बट अगर बात करें इंडियन टीम्स का, तो ये लोगों को एग्जिबिट हॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। एग्जिबिट हॉल, मॉल, शोएंटन, चेस्टर, मेसा, मतलब इन जगहों पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो देखना होगा कि क्या ये यही लोग जाते या इन्होंने अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई और यहाँ पे रूट लेना चाहते हैं, कोई अलग तरीके से खेलना चाहते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में ड्रॉप क्लासेस का तो हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि ड्रॉप क्लासेस हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। Right, definitely. And looking at Exhibit Hall, I think it will still not get any love today. But one of the most loved places today would be Vermont. Definitely, we see 3 teams going to Vermont. And the drop clashes there would be something to behold, something to watch out for. And let's see where these teams drop. So, those that don't know, this particular house is one of the best places to loot because, well, one, it just looks so beautiful, Sigma. I think that house is one of the most beautiful buildings in the entire game in New State Mobile. And at the same time, it has a vault, right? And for 5 seconds, you take 5 seconds to open the vault. Once the vault is open, there is a wad of cash sitting for you, and just claim it for yourself. And you will get about at least 500 credits. And 500 credits is really fun to get this early in the game because that allows you to go for a green flare or a red flare, whichever have you. And team number 3 is blessing. Look at that. They found a car and they will knock down one enemy. So that enemy currently at the mercy of these vehicles would be really good to see. And at the same time, I think it was their teammate Madhab. Madhab has that. What is that vehicle called, Sigma? I'm not able to correctly recognize the vehicle. This one. What is this called again? It's one of the fastest weapons out there, right? बिल्कुल, ये बहुत ही फास्ट कार है। वेल, इसका क्लियर नेम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो एक इसकी स्किन आई थी जो कि थी बुगाटी रिमैक निवेरा हाइपर कार, उसकी वो स्किन है और ये कार बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन इस कार की खासियत भी है कि ये बहुत ज़्यादा बैटरी लेती है और बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। इसके लिए इस व्हीकल को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होती है, क्योंकि ये इतना फास्ट चलती है कि इसका पेट्रोल तो सबसे पहले इसकी बैटरी खत्म होती है, देन ये कहीं पर भी ये लड़ जाती है, क्योंकि इतना फास्ट चलती है आप इसको जल्दी से मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप
साथ एनिमी की फाइट होती है तो एक चीज़ इस व्हीकल में डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि इसका गेट ओपन नहीं होता है, और अगर आप पे व्हीकल चेंज हो जाता है एंड व्हीकल फाइट आप ले रहे हैं तो ये गाड़ी आपको, ये व्हीकल आपको काफ़ी डिसएडवांटेज में डाल देती है। तो मुझे एक तरह से इसकी स्किन और इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, वहीं पे इसमें कहीं कहीं पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी मिलता है, वहीं पे इसकी स्पीड से हमको काफ़ी एडवांटेज भी मिलता है। Right, okay, and looking at, I think this will be, I'm not sure what this place is exactly, but we will see a drop clash here, and Tej goes down to, well, it was a DBS, and Kapodi from Team 11 will be able to see his teammates here, Magician and Jumping, just waiting for that jump. I mean, they probably want to go for it and get a few knocks themselves. They do know that the enemy team has 2 players knocked, or at least had 2 players knocked, and all of those will be very low on HP. If Team GH decides to move in, they can perhaps get a really easy kill. I don't know why they're hesitating, Sigma, but I think, once they go in, it should be rather simple for them to get a squad wipe, and nobody wants to get squad wipe this early in the game, right? Because you want to get those position points, you want to get those skill points, and Tej again will be going down to jump in. So Sigma, take over, tell us more about this fight as it goes on. बिल्कुल, वहाँ पे मुझे नहीं लगता वो क्यों इतना रुक रहे थे, उनको प्रॉपर एक ग्रेनेड करना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे अगर देखें सिंध की तरफ से तो उन्होंने एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया है NB77 को, और ये टीम 14 अंदर घर की तरफ रश करते हुए दिखाई दे रही है, और सामने की टीम अगर बात करें टीम 11 की तो काफ़ी खतरे में दिख रही है। यहाँ पे इनके सिर्फ 2 ही प्लेयर अलाइव है टीम नंबर 14 के। मुझे लगता है कि ये अभी उतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 11 के प्लेयर ने यहाँ पे रश किया और यहाँ पे नॉक कर दिया है सिंध को, और क्लियरली मैं यहाँ पे नाम देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली DB17 आई थिंक यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, और यहाँ पे सिंध इनके एक प्लेयर नॉक है। मैजिशियन यहाँ पे इनके लिए काफ़ी सिचुएशन खराब हो चुके हैं, बट यहाँ पे उनको रिवाइव देंगे। सामने प्लेयर्स हैं, टीम नंबर 11 का एक प्लेयर यहाँ पे है, उसकी हेल्थ भी हम लोगों को कंप्लीटली फुल नहीं दिख रही है। अगर चाहे वो रश कर सकता है तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा झटका दे सकता है, लेकिन वहाँ पे रश किया टीम नंबर 11 के प्लेयर ने, लेकिन मैजिशियन का यहाँ पे कमाल का तरीका, यहाँ पे सिन को उसने एक बार फिर नॉक किया था, लेकिन मैजिशियन ने काफ़ी दिमाग लगाया, विंडो से होकर गए और उसको फिनिश किया और फिर से एक प्लेयर को रिवाइव किया। तो मैजिशियन डेफिनेटली यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी और उनका जो खेलने का का बहुत अच्छा दिखाई दिया हम लोगों को। Definitely, so Team 11 will be going down, and Zatara IN is the last remaining player from his team. Lots of pressure on him because this is early game right now, Sigman. If he gets that credit, if he gets those credit points, and if he's able to revive, then all is good. But in case he can't, he has no lives left. He cannot afford to get knocked out, and therefore he probably cannot even afford to take a fight. And here's the thing, Sigma. One of the best ways to get cash early in the game is to kill those people and loot those people who've done the hard work for you. So you just sit there, you camp a little bit, and people look down on camping as one of the worst things to do, but it actually isn't. If you know that a team is going to loot an entire area, your team can just hold in, wait for them to loot the whole thing, do the hard work for you, and then just kill them with a grenade or two while they get in the vehicle, and therefore you will have all the loot that they worked so hard for, all the hopes and dreams that they had. You just crush it like that. So Fiqi, do you think that style is good, or do you think camping should not be done no matter what? Camping menurutku itu lumayan bagus juga ya, karena ketika kita bisa menggunakan strategi itu, kita akan bisa menempatkan posisi yang tepat dan musuh juga tidak terlalu mengetahui keberadaan kita pada saat itu jika kita tidak terlalu banyak bergerak atau menembak. Dan menurut aku camping itu tidak masalah, karena itu bukan termasuk orang noob atau apa ya, karena itu masuknya lebih ke strategi. Itu adalah strategi yang sangat baik menurutku. Dan ketika kita camping, teman-teman kita sudah gak ada semua, misalnya kita tinggal sendirian, terus kita posisinya lagi di Fairmont juga, dan di sana otomatis tim lain yang sudah ngelut di sana itu lumayan banyak juga, mereka di sana juga pastinya mendapatkan uang yang banyak. Jadi lebih baik kita di sana menunggu sampai mereka memasuki ruangan kita dan HBD lah mereka begitu. Di sini ada AM Shadow. Di sini ada tim 9 dan tim 18 di sini ya. Di sini Gili ada 2, Gili dan Praksi di sini ingin mencoba untuk meruntuhkan tim 9 di sini ya, tim AM ya.
AM di sini bertiga dan di sana Gilie berdua saja. So what do you think about this? Who is 9 on or 18? Like Well, looking at the situation here, it does look to be in favor of Team AM because they do have two players knocked out from the opponent team, and they also have really good weapons right now. I mean, looking at Vector and M760, both of them are rated one of the best weapons for close range gaming, along with Thompson and M249. So it's yet to be seen how Yes, yes. Team Anahata is going to face this situation. In the meantime, we will also look at Team B State, who is going for a fight right now against Team 17. So let's look at how Revol, who is also the IGL of the team, how he approaches it, or maybe he just wants to get a better angle right now. I mean, it wouldn't be the worst situation if they just run away, because running away from a fight is not cowardice, it is just a strategic retreat that they could go for right now, because they do have only 3 players, and unless they have a man advantage, it would actually be smarter to run away and live to fight another day, right, Sigma? बिल्कुल जब अगर आप डिसएडवांटेज में हो तो थोड़ा सा हटना और एक नई स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जोश जोश में फ़ाइट लेना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप श्योर नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको फ़ाइट लेनी चाहिए। आपको एक नया डिसीजन और अपने टीममेट से भी सलाह करनी चाहिए। और बाकी बात करें यहाँ पे टीम बी स्टेट की, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। फिर भी क्योंकि ऑब्वियसली इनके डिसीजंस और इनके गेमिंग स्किल से पता चलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका एक ये स्मार्ट मूव या कहें एक अच्छा डिसीजन है इनका। Right, and looking at the Vector skin, I mean, let's just talk about the Vector because I love the gun so much. I mean, me just too, looking at the weapon, you too, right? I mean, Yeah. yeah, it is one of the best weapons. If you customize it, though, the damage does increase, right? But the downside is the muzzle attachment gets taken away. And the thing about the muzzle attachment is why that's important is because also one of the downsides is the recoil goes up a little. So you can't really use it outside of the 100-meter range. Then again, it's not known for the long range fights that it enables you to have. But, you can't use a compensator, you can't use a suppressor. So there are limitations, but it also has great deal of power. It's like a glass cannon because it shoots once, and when it shoots, it shreds. But at the same time, it also has a very high rate of fire, but not as big of a magazine. So if those 35 bullets, which is the extended part, if you are not able to shred an enemy in that given time, then you will go down because the reload does take quite some time. As far as close fights is considered, it is one of the best weapons, but it does have a few advantages. In the meantime, we will see team number 3 in Alamo. And what do you think about Alamo, Sigma? Do you think Alamo is a good place to be in? I'm not sure if Sigma is. हेलो मैं हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें अलामो की, तो अलामो एक अच्छी जगह है, अच्छी लूट मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इसको चूज़ करते हैं। अगर बात करें स्क्रिम्स में, तो स्क्रिम्स में ज़्यादा ही यहाँ पे चूज़ करते हुए दिखाई दे रही है। इन द मीन टाइम यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लरी की, तो वो नॉक किए जाएंगे ब्लेजिंग गॉड की तरफ से। टीम नंबर 14 के सारे प्लेयर यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं। जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं कि मैजिशियन ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया था। यहाँ पे इनके 2 प्लेयर फिनिश हो चुके थे, 1 प्लेयर डाउन था, लेकिन अभी ये टीम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हम लोगों को दिख रही है और डेफिनेटली इनकी तरफ से भी हमको काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखेगा, क्योंकि इनके अभी तक 4 किल्स हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 7 की, तो ये यहाँ पे इनकी 1 प्लेयर की कैजुअलिटी है और ये यहाँ पे पानी के अंदर अपनी व्हीकल लेके आ चुके हैं। आई थिंक ये कोई ग्लिच मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं पता। एंड ये ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं आगे की साइड। अभी भी ये जोन के अंदर है, जोन सर्वाइव कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इनको जल्दी से जल्दी जोन के अंदर जाना होगा। वेल इनके 1 प्लेयर आगे, बहुत आगे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा पीछे हम लोगों को चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। Alright, and talking about team number 7, then it probably is in the best position to be in right now because they did lose their vehicle. Because as you know, electric vehicles when outside the zone consume a lot of battery, and I don't think they're able to spot the vehicle to their left, which is immediately to their left. If they just look there once, perhaps they would be able to see it, but I don't think they looked in that direction at all. It's like less than 50 meters or something, but just perhaps isn't something that they are able to do. Also, this happens, Sigma, because when under the pressure of the finals, we have seen people tunnel vision onto certain elements in the game and they are unable to see the complete picture, the clearer picture.
And I think that's what happens sometimes, right? Fiki, do you think that people tunnel vision a lot when under pressure? Iya, jadi gini, ketika mereka berada di luar zona, ya pastinya tentunya mereka akan kesulitan. Dan juga apalagi kalau di dalam zona ada musuh yang menunggu mereka begitu. Dan juga ketika misalnya tadi di sini mereka kehabisan bensin, bahan bakar, mereka kehabisan bahan bakar dan kesulitan untuk menemukan kendaraan baru, tentunya akan sulit begitu. Di sini ada tim GH. Mari kita lihat di mana tim GH di sini. GH. Oh, there you go. Tim 14. Di sini ada tim 14, tim GH di sini. Green kalau nggak salah depannya, Green Hydrogen. Di sini Green Hydrogen tim 14. Di bawah tim 1. Oh, sayang sekali. Tampaknya dia melakukan kesalahan yang cukup fatal karena di bawah ada tim 1 yang sedang menanti kejatuhan di mereka, dan dia memilih untuk terbang ke bawah, untuk melompat ke bawah, dan itu kesalahan yang cukup fatal di sini. Dan ini di sini Imagician tim 14 tersisa 2 player saja, dan kita melihat tim Yasho di sini yang sendirian. Kita melihat apakah tim GH akan menaiki tangga atau hanya ingin melempar. Oh, di sini Yasho sudah turun kembali dan tampaknya tidak diketahui oleh tim 14 di sini. Granat sudah dilemparkan ke atas tetapi Yasho sudah di bawah. Oh, di sini dia. GH. Sayang sekali, miss aim sedikit saja, tapi Yasho, kamu sudah melakukan yang terbaik pada saat ini. So Yeah, definitely. And you saw team number 14 just eliminate one more team here, which was an amazing play. I mean, what they did here was quite brilliant. What they first did is get as many knocks as they possibly could before actually rushing in, getting those angles in, and getting that gunfight in very early so that the enemy didn't even get the time to react. And then they finished off one by one, the players. And keep in mind that they moved together, but they also isolated that fight so that they had the upper hand while taking a fight. And so Loganville will be claimed by them, easily the winners and the kings of Loganville. In the meantime, we do see one team in Port and one team around Alamo. And I think the team in Port finally found the vehicle that I was talking about. In the meantime, City Hall does have 2 teams, and one of them is running away, which is probably the best thing to do when you are against Crawlers, because Crawlers is one of those teams that have the experience. Unfortunately, that experience didn't really translate into a position in the ROG tournament that happened recently. But you learn from your mistakes, and each game is different. So perhaps we shall expect greatness from them in the following tournaments and the following events, right, Sigma? बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी उम्मीदें हैं। और अब बात करें यहाँ पे जोन की, तो जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, बट हम लोगों को क्या देखने को मिला है, 56 प्लेयर अभी भी अलाउ हैं, और कुछ टीम्स के कुछ प्लेयर्स, या बोले कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पे हम लोगों को जोन में सर्वाइव करते हुए दिख रही है। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जोन के अंदर हैं, उन्हीं के कुछ प्लेयर्स जोन के बाहर हैं। तो मुझे लगता है ये ग्रेट स्ट्रेटजी लगा रहे हैं कि अगर हम आगे जाते हैं, हम अगर फिनिश हो जाते हैं, नॉक हो जाते हैं, तो तुम पैसे इकट्ठे करके रखना, हमें बुला लेना। बल यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 17 की, तो ये लोग अभी जोन से हल्का ही बाहर आए हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चाहते हैं यहाँ पे रुकना, मे बी इन्होंने कोई टीम को या कुछ प्लेयर्स को स्पॉट किया होगा। जोन के अंदर देखें तो काफ़ी जगह यहाँ पे हम लोगों को टीम्स दिख रही हैं। और बात करें टीम नंबर 7 के सामने, तो यहाँ पे टीम नंबर के एक प्लेयर दिखे थे, और यहाँ पे 2 कैजुअलिटी के साथ टीम नंबर 18 चल रही है। इनके 2 प्लेयर अलाइव हैं, 2 फिनिशर हैं, तो इनको डेफिनेटली अपने प्लेयर्स को रिवाइव करना होगा। और यहाँ पे अगर बात करें जीएसएन एंड जंपिन यहाँ पे रिवाइव होते हुए आ रहे हैं। मैजिशियन टीम की बात करें, इन्होंने एक स्क्वाड को फिनिश की, तो डेफिनेटली आपके पास इतना रुपया इकट्ठा हो जाता है, इतना पैसा, कि आप उससे 2 नहीं 4-5 फ्लेयर गन ले सकते हैं और अपने टीम को रिवाइव कर सकते हैं। इन द मीन टाइम अगर बात करें तो यहाँ पे तमिल नाम का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक किया जा चुका है, तो डेफिनेटली एक प्लेयर और गया है। सो आगे देखना होगा कि आगे टीम्स का क्या मूव रहता है। Right, and let me just give you a little bit of background on Anahata Tamil. So Anahata Tamil is a Tamilian streamer, and he's also trying to get into casting. I remember very recently, we did talk about doing an English set together. So watch out for that one, boys. In the meantime, team
Destiny Esports. It is not Diode anymore. It is Destiny Esports. Back to Easy, the only person remaining, and probably he will also get taken out because he's low on HP with the Thompson, but won't do him a lot of favors. He is going underwater. Perhaps a really good thing to do at this position because, well, it should be rather difficult for anyone else to spot him since he's under the water. But once he's there, he can't heal up. He will have to go somewhere, and whenever he steps on land, he will be getting those. He will be giving those footsteps, and those footsteps can prove to be deadly for him if they come to chase him. Right. In the meantime, we see team number 17 with 3 kills at this moment. One of them is knocked out, and this was the team that I believe was trying to go edge to edge, but they did spot out team Destiny Esports coming in, and they went for it. And it turns out that it was the right decision since they did get 3 kills. But if they could get the 4th, they could eliminate one more competition for their team, right? Sigma, or rather, we'll just talk to Fiqi here. So, Fiqi, we see another car chase. We saw another car chase happening with the Volta. Ya. So, do you think the car meta will go down anytime soon? Ya, menurutku di Troy ini kan Volta ini sangat sakit ya, soalnya dari sana mengaimkan senjata itu lumayan kena gitu aim assist-nya. Terus juga menurutku kendaraan itu memang harus di nerf di sini karena kendaraan itu memang cukup sulit, apalagi kalau mobilnya Volta itu kan terlalu melaju cepat gitu, terus memuteri rumah, dan player yang lain bisa dengan leluasa untuk melempar bom ke dalam satu rumah, apalagi yang letaknya cuma satu rumah, kita satu tim berada di dalam satu rumah, dan itu menurutku sangat tidak menyenangkan sekali. Di sini kita melihat tim 10 yang 3 temannya sudah dieliminasi oleh tim Top Fraser. Di sini kita melihat di sini Swag memilih untuk berenang saja menjauhi dari tim hijau di sini. Dan menurutku lebih baik tim 17 ini kenapa tidak maju saja ke sana? Karena di situ tinggal satu lagi. Mereka bisa aja untuk mengeliminasi tim 10 di situ, tapi mereka memilih untuk menjauhi posisi dari tim 10. Di sini juga di sini ada tim 7 SQ di sini sendirian, dan teman-temannya di sini udah berada di tempat yang lain tampaknya. Di sini dia ditembaki oleh tim Top Fraser di sini. Terus juga kita melihat zona sudah fase keempat. Di sini zona sudah lumayan sakit, sebentar lagi 1 menit 30 detik lagi sudah mulai memasuki fase keempat, dan mereka harus segera untuk memasuki zona dan jangan berharap bisa selamat dari zona biru, karena ketika sudah di fase 5 itu sangat drastis sekali turunnya, kecuali kamu harus berjalan dengan terus heal, dan di sini sudah mulai banyak yang memasuki ke circle. Di sini banyak juga ada beberapa tim yang masih berada di luar circle. Di sini ada tim kuning, ini tim 14, tim GH ya, Green Hydrogen. Di sini ada tim 14 masih berada di pinggiran zona. Kita melihat di sini Swag juga masih berada di dekat sini. Kita lihat Swag dari bawah, dan tampaknya akan bertemu kembali dengan tim hijau atau tidak. Kita melihat di sini Swag sudah mulai menyeberang, namun tim hijau di sini, tim Daku tryhard di sini memilih untuk berada di sisi kiri, dan Swag memilih untuk berada di sisi kanan. Sayang sekali tim Daku tidak bisa bertemu dengan tim Swag pada pertandingan ini. Di sini Swag juga hanya memiliki 1 medkit lagi dan tersisa 4 bandage lagi. Di sini sangat sedikit sekali, dan uangnya juga sudah sekarat, hanya 210 saja. Akan kesulitan untuk merevive teman-temannya karena zona mulai berjalan pada kali ini. Di sini kita lihat di tengah. Di sini dengan tim AM. Tim AM di sini menggunakan di situ ada di sini tim 12 ada tim Excuse. Tim Excuse di sini lagi-lagi terkenok di sini X neutral dan sedang di-revive oleh temannya. Dan kita melihat tim mana yang mengkenokkan mereka. Mari kita lihat di sini.
Oh, tidak kelihatan. Oh, di sini. Tim 7. Tim 7 mendekati tim 12. Right, like? Hi there, and welcome back to the game because EQ will be taking a fight right now, and that fight is Oh, against EQ. Rana's team. And yeah, so let's look at Team EQ and what kind of fight that they are into. Which- It should be rather fun to see Oh, here, because here. EQ is again Equilibrium, which is one of the best teams out there, if I may say so myself. Razor, the only person remaining alive, is he. If he's able to get those revives in, then they have a fighting chance. Otherwise, they will go down to Team 4 because we have seen Team 4 also go for the vehicle plays right now. So if they are able to just rush into them, and if they are able to, yeah, there you go. As I told you, they're going for it, and Team EQ will get taken down. And it's funny how these things happen, right? I mean, just imagine spending a lot of time making sure that you have the coordination and making sure that you get your practice range gunfights in and all of that. You practice for so long, Yeah. and then when the actual game is going on, one team made a decision to go into the zone a bit earlier than you, and that few seconds or that 1 minute is all it takes. It's the difference that makes it so that they are the ones chasing you instead of you chasing them. And you don't want to be chased. You don't want to be chased by one of those teams because they know exactly what they're doing. They even have dedicated drivers to make sure that they are able to get the best position in with that vehicle. Right, Sigma? बिल्कुल इतना मेहनत अगर इन द मीन टाइम रिफ्लेक्सर यहाँ पे किसी को स्पॉट करते हुए और सामने यहाँ पे टीम नंबर 14 के साइड यहाँ पे फायर करते हुए दिखे। आई एम सॉरी, टीम नंबर ये यहाँ पे 19 है, मुझे सही से दिखा नहीं। एंड यहाँ पे अगर बात करें सूचा की तो यहाँ पे वो ब्रूटल द्वारा पिक किए गए हैं और फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे टीम नंबर 19 ने ग्रेनेड किया, देखना होगा क्या ये ग्रेनेड सक्सेसफुल होता है, क्या रिफ्लेक्सर को यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डैमेज मिलता है नहीं। और लेकिन इन द मीन टाइम यहाँ पे GFX के प्लेयर यहाँ पे नॉक किए जाएंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्सर जोन से यहाँ पे फिनिश किए गए। रिवॉल्वर बीस्ट ने एक प्लेयर को नॉक किया है। यहाँ पे गॉड और वॉट रिवॉल्वर बीस्ट द्वारा यहाँ पे नॉक किए जाएंगे, न्यूट्रल स्लेयर द्वारा नॉक किए जाएंगे। एंड शेमी ऑन मी, ओके शेम ऑन मी जो भी नेम है। एंड ये यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं लेकिन इनको शायद पता नहीं चला है कि रिफ्लेक्सर यहाँ पे जोन से फिनिश हो चुके हैं। अब इनको जोन की तरफ जाना होगा। यहाँ पे अगर हम जोन की साइड देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे व्हीकल नचाते हुए दिख रहे हैं, कोई भी रुक नहीं रहा है, सभी व्हीकल फाइट लेना चाहते हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पे अगर बात करें व्हीकल की फाइट यहाँ पे टीम नंबर 3 से हो गई है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कारें फूटी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे अनाहता तमिल नॉक किए जाएंगे JOP द्वारा, पर 4XI भी नॉक किए जाएंगे एक प्लेयर द्वारा। इनके सामने अगर बात करें क्रॉलर व्हीकल के सामने इनके एक टीम है, पीछे भी एक टीम है। यहाँ पे फेरोसिटी के सामने भी एक टीम एक ग्रेनेड किया जाएगा और देखना होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब ये सिचुएशन जो है ये सबसे मेन सिचुएशन है। सामने यहाँ पे TR की टीम है, फेकेज है, रिएक्शन है बगल में है और यहाँ पे व्हीकल नॉक किए जाएंगे। यहाँ पे बदमाशी के द्वारा फिक्सिटी नॉक करेंगे रिएक्शन को। यहाँ पे क्रॉल फेरोसिटी नॉर्मल द्वारा उठाए जाएंगे। यहाँ पे रिएक्शन फिक्सिटी द्वारा फिनिश किए गए, JOP फिनिश किए जाएंगे फेकेज द्वारा। VLVT काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है, मैं सभी को कवर नहीं कर पाऊंगा। क्रॉल रोच यहाँ पे फिनिश किए जाएंगे, फेकेस यहाँ पे जोन द्वारा फिनिश किए गए। यहाँ पे टीम नंबर 4 के 2 प्लेयर नॉक हैं, एक प्लेयर है यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्मल रिवाइव करेंगे अपनी टीम को और टीम नंबर 4 यहाँ पे डेफिनेटली रिवाइव हो जाएगी 9 किल के साथ। ये टीम काफी ज्यादा ओपी चल रही है। यहाँ पे अगर बात करें डाकू विक्टर के द्वारा यहाँ पे पिक किए जाएंगे। सामने यहाँ पे फिक्सिटी स्पॉट किए हैं टीम नंबर 4 के कुछ प्लेयर को। इन्हीं के बगल में टीम नंबर 12 के बदमाशी भी हैं, तो इनको डेफिनेटली काफी सोच समझ के खेलना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी भारी गलती हो सकती है, क्योंकि कहाँ पे आसपास ही आपकी खोपड़ी पर ही काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स लेटे हुए होते हैं, प्रोन होते हैं, कवर क्राउच सब कुछ किए होते हैं और अगर आप एक गलती करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। महाकाल भी यहाँ पे पिक किए जाएंगे एक प्लेयर द्वारा और देखना होगा यहाँ पे ब्लेजिंग गॉड को, ये मुझे लगता है तुरंत ही रिवाइव हुए हैं और इनके पास कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनके पास इनके पूरे कपड़े तक नहीं हम लोगों को दिख रहे हैं और इनको काफ़ी बच के खेलना होगा। ये लेट गए हैं, अगर इनको एक क्रेट मिल जाता है देन ये डेफिनेटली बच सकते हैं। एक्टो बिस्ट यहाँ पे एक प्लेयर द्वारा पिक किए जाएंगे और नॉर्मल ने यहाँ पे बदमाशों को पिक किया है, माधव भी यहाँ पिक किए जाएंगे विक्टर द्वारा। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्लेयर फिनिश हो गए। अभी हम देख रहे थे 55 प्लेयर रह हुए हैं और इस जोन पे इतने टाइम पे हम लोग को सिर्फ 17 प्लेयर अलाइव दिख रहे हैं। बात करें रॉयल बिस्ट की तो अकेले प्लेयर बचे हुए हैं इनके सामने
अन्य 2 से 3 टीमों के सारे प्लेयर हैं और इनको बहुत ही बच के खेलना होगा। यहाँ पे ब्लेजिंग गॉड की बात करें तो ये भी प्रोन होकर बैठे हुए हैं, ये कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहे हैं ताकि अपने टीम के लिए ज़्यादा सर्वाइवर पॉइंट ले पाए। लेकिन यहाँ पे डेफीसी ऑन ने यहाँ पे रिवॉल्विस्ट को स्पॉट किया और अपनी स्नाइपर से एक शॉट दिया और फिनिश हो गए। तो यहाँ पे टीम बी स्टेट पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। यहाँ पे टीम नंबर 4 जिसकी बात करें वीएलवीटी की, इनकी तरफ से काफी बार हमको अच्छा गेम प्ले देखने को मिला है। ये काफी टीम सामने के प्लेयर्स को स्पॉट किए हैं, ये यहाँ पे हाइट ग्राउंड एडवांटेज पे चल रहे हैं। यहाँ पे ये जोन द्वारा फिनिश किए जाएंगे, पहले तो ये नॉक हो गए। नॉर्मल यहाँ पे DRXR द्वारा नॉक किए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ JDOP बचे हुए हैं और तीनों प्लेयर नॉक दिख रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 13 के विक्टर की, तो विक्टर ने काफी प्लेयर्स को यहाँ पे फिनिश किया। डेफिनेटली हम अगर किलफील्ड की बात करें तो काफी देर से हम लोगों को काफी ज्यादा प्लेयर यहाँ पे फिनिश होते हुए दिखाई दिए। नॉर्मल जोन द्वारा यहाँ पे फिनिश किए जाएंगे, DRXR भी यहाँ पे जोन द्वारा फिनिश किया जाएंगे। टीम नंबर 13 के तीनों प्लेयर हम लोगों को यहाँ पे लाइव देख रहे हैं 7 किल्स के साथ। यहाँ पे अगर बात करें JDOP की, तो इनकी टीम के 13 के टीम नंबर 4 के और जेड यहाँ पे अकेले बचे हुए हैं। ओके लाइट कंटिन्यू। Take a break, man. You've been speaking that fast for quite some time. Maybe it's time for you to take a small break yourself. At the same time, we have 7 people alive. The zone is the 7th zone. It's quite small, and we only have one team with 3 players, and it should be making everything difficult for the other teams remaining. I think AM is the only other team with 2 players with more than 1 player. So yeah, team number 4 Zoid OP is going to take a little chill break here because his vehicle has been damaged. A few more bullets and that could be the end of it. So tensions are high, but team number 13 does have the players, so they will be, just relaxed relative to the other players because as we see, Gali Dhanapad is the only person remaining as well with the 6x and a DP. It should be easier for him to survive until the end considering how he's closer to the zone, and that means when the zone shrinks it will be rather slower for him and he has to move in a bit slower compared to the other teams. He does get spotted out, he's in the zone, and he will be taking a little bit of damage every few seconds. So I think Blazing God will get taken down. Yeah, I think he was also the last remaining player from his team, so he's gotten taken down. Zoid OP, one of the players for the win. If he's able to take down just one more player, just one more, it will be a one-on-one, right? And we all love to see it. We all want to see how team number 13 performs in that situation. They do know Zoid's location, so they do have a little bit of info. Will they be able to capitalize on that info? Not. Perhaps not, but the zone will take him down. So it's just 1 versus 2 in this situation, and AM's, I'm not sure, it is AM's brutal OP. He will be knocked, he's almost down. I mean, he's low on HP, he should heal up right now, and that's what he did. He has a grenade. Can he go big here? Do you think, Natha, do you think, Fiqi, he will be able to go big? Do you think he'll be able to take down 2 players with just 1 grenade? Kalau grenade-nya menempati posisi yang benar dan sayang sekali, tapi satu grenade ini bisa dilemparkan ke atas jika dia meng-aim bom itu dengan benar. Oh, sayang sekali bomnya ke sana dan dia berada di atas sini dan dia mengebom ke arah kanan atau mungkin untuk supaya mengalihkan perhatian musuh ke arah kiri, kemungkinan seperti itu. Tapi tim 13 di sini mengetahui keberadaan Alpha Man di sini. Ini tim 9 dengan nama tim Alpha Man memilih untuk berada di luar zona. Oh, right guys. There you have it, the chicken dinner for team number 13, and yeah, they have the man advantage, they have the position advantage, so definitely it is a bit easier for them to get the chicken dinner, but really good performance with 8 kills. They will be getting the first position and moving that much closer to their spot in the leaderboard so that they can actually go against international teams now. Oh. We also have team AM and team VLVD. Look at VLVD's score, man. They have the 3rd position and also the 14 kills. So yeah, that is something that you need to watch out for. If they can get 14 kills here, right, Natha, right, Fiqi, if they can get 14 kills here in the future, they can perhaps get even more. Oh my god, the leaderboard just loading and I can see the leaderboard, man. I can score them without this. I think we're just going to have to ask the teams how many kills they got. Perhaps they can be true about it. Guys, if you're watching this, please just
It was a technical error. It won't happen again. We promise you. But could you just type in the chat how many kills your team got? Please don't inflate it. Please be true about it. And we expect you to be honest because we're doing this for you guys. So be honest here and let us know how many kills your team got, so we can rank you accordingly, right? And we can make sure that you deserve and you get the spot that you deserve, right? So yeah, that's that. And that was the first game. It was really fun to see how the tables had turned for so many teams and they were moving in. At one point we saw that there were kills going on left and right, and it was a complete battlefield. I mean, there's this one spark that triggers a whole forest fire, and that's what it was like. This one fight between two teams, and everyone else joins in for the third party, for the fourth party, and in the end there's just so much chaos that I think my friend Sigma here almost lost his voice because he was speaking constantly and just telling you about who has taken down whom. So Sigma, we don't expect you to put this performance on for much longer, but definitely the fights that happened in that small segment of time were amazing to see, right Fiqi? Ya, ya, ya. Jadi di sini tadi baru saja terjadi bug ya pada leaderboard. Aku belum selesai scroll tapi tiba-tiba terjadi keanehan di sini karena tiba-tiba langsung loading dan langsung keluar begitu saja. Tetapi aku belum sempat melihat kill dan rank mereka. Aduh, bagaimana cara aku untuk men-skor mereka karena aku tidak bisa menghitung poin mereka jika tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Jadi aku akan meminta screenshot dari mereka untuk mengetahui kill mereka. Guys, please screenshot. Yeah. Provide screenshots, guys. And if you have taken them, if you haven't, that's okay. Just type in how many. But if you can provide screenshots, that would be amazing. We will be tallying the scores based on how many players there are, so we will know if there are any discrepancies. Keep that in mind. If we found out that you have cheated while you are telling us the scores, if you are able to find that out, you will be disqualified, not from this tourney itself, this international scrims qualifiers, but from the future as well. So please don't make any such rash decisions. Be honest, be truthful, and let's have a fair game here, right? Ya, jadi kita akan melanjutkan ke pertandingan yang selanjutnya, ke round 2. Jadi kali ini pada final India kali ini kita akan mengadakan 3 kali pertandingan untuk mereka. Karena mereka pada minta 3 kali match. Dan kata mereka 2 match itu sangat kesusahan Kak, begitu. Jadi kita akan melakukan 3 pertandingan untuk final India kali ini, dan kita akan mengambil 8 kandidat terkuat untuk melawan tim Indonesia. Jadi kalian jangan lupa yang sudah nonton, jangan lupa untuk support, like, comment, subscribe ke Fiqi AMD, also to like. Hey. Well, yeah, guys, so that was the first match, and if you liked what you saw, then definitely like the stream, subscribe to the channel, because Fiqi will be bringing you more such content, more such fun, and more such entertainment. And also share it with your friends, watch it together, learn from the best, because these people here represent the cream of the crop, right? And my name is Light, my channel is Lightcast, and joining me today is also Sigma from Sigma Plays. So Sigma, what do you have to say about the first match? बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा फन लगा। मुझे जो टीमों से जो उम्मीद थी काफ़ी ज़्यादा आगे निकली। मैं अगर बात करूँ VLVT के, तो मैं कई मैच इनके देखा हूँ, इनको मतलब काफ़ी नोटिस करता हूँ। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर हैं, और इनकी एग्रेसिव मतलब डेफिनेटली उतर के आती है गेम में, जितना ये एग्रेसिव हैं। अगर बात करें, हमने पिछले कई मैच कास्ट किए, उनमें मतलब क्या भयंकर खेले। टीम छोड़ते नहीं थे, ये जिसको देखते थे उसको बहुत मारते थे। और यहाँ पे बात करें टीम बी स्टेट की, या और भी जितनी भी टीमें थी, बहुत सारी यहाँ पे, टीम इक्विलिब्रियम, टीम SMG, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और भी इनसे और भी अच्छे की उम्मीद है, जैसे कि हम और अच्छा बेहतर परिणाम देखें, हम और अच्छा कास्ट कर पाएँ। और गाइज, ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आपके लिए स्क्रिम्स लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो सारे के सारे क्रिएटर्स एंड टीम्स को, और साथ में इस चैनल को भी, ताकि फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छा ये कर पाएँ।
Ya, jadi kita akan melakukan istirahat selama 10 menit ke depan dan buat kalian yang semua jangan lupa untuk jangan tinggalkan match kedua kali ini karena akan seru sekali pertandingan yang kedua kali ini. Dan buat kalian ambil popcorn, ambil cola, terserah kalian sambilan cemilan untuk menunggu. Oke, kita akan menanti untuk pertandingan kedua dan tunggu kita akan kembali dalam 10 menit lagi.
Well, guys, Halo welcome back guys. to the second match, and we will be taking off pretty soon. As soon as the plane takes off, yeah, we're just waiting for the last few people to jump in, and then we'll be starting with the second match and the final match of today for Fiqi AMD's international qualifiers, and this time for the Indian teams. So these people, if you, in case you missed it, these people have competed over the last 3 days in their individual groups to make it here, and they are competing here to go for those international qualifiers, those international scrims. And when that scrim happens, you will be representing your country. So it is a major title, right? Representing your country is a matter of pride. It is a matter of, well, grit and practice and all of those things. And these teams have put in the effort to be here. And now we Oke. shall see their journey as they go in to the yeah, from the spawn island all the way to the top of the stage where they're holding a trophy in the championship. So this is their journey, and welcome back to the second map. Well, this is going to be Troy as well. And Sigma, what is your take on the last match, and where do you think this match will take us? बिल्कुल, पिछला मैच काफ़ी शानदार था और काफ़ी शानदार गेम प्ले देखने को मिला, काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिली। तो वैसा ट्राई में भी हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली ट्राई में ही हो रहा है, देन यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखना ये होगा कि ड्रॉप क्लासेस में हम लोगों को देखने होंगे कितने अच्छे होते हैं, कहाँ कहाँ पे जाती हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन टीम्स होती हैं, अगर वो पास पास भी होते हैं तो फाइट नहीं लेती, वो वेट करती हैं, आगे बढ़ती हैं और लास्ट तक वेट करती रहती हैं। वो ज़्यादा फाइट में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो देखना होगा कि ड्रॉप क्लासेस होता है और कहीं पे क्या फाइटें होती है और कहाँ कहाँ टीमें जाती हैं, क्योंकि काफ़ी टीम होती है जो एग्रेसिव खेलती है, काफ़ी पैसिव खेलती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। And talking about the plane path, then it goes from Alamo to Chester, then to Mesa, and then towards Bay Area. And we have seen Alamo having two teams and more. And we also have seen Vermont having lots of teams. I don't think Exhibit Hall had gotten any love last game, as we have seen in the past as well with the Korean teams. When the Korean tournament was happening, we did not see any teams go there as well. And most of the times we do see people going for those small little locations like the ghost town on the top left of Chester, that unknown little area, that unknown little city. And we have seen teams go there, but not in anywhere else. So let's see if teams go there as well, and Ghost City may be receiving more love than it actually deserves, because it cannot house more than two teams. If it does, there will definitely be early clashes, and one team will risk it all to go back home empty handed. Well, in the meantime, we will look at all the other teams and where they choose to go. I don't think Graveyard is going to get any people here, and so it will be silent, staying there with the roses and the bodies. And those that have done the missions know that there are roses there for you to take. You had to collect 3, I think, for this week's missions. And yeah, so there's that. Team number 16 did perform quite well last time. Let's see if they're able to claim Chester for themselves, right, Fiki? Ya, di sini ada tim dengan tim 16 dan tim 6 di sini yang sudah turun ke dalam match Chester di sini. Kita melihat di manakah yang akan unggul, dan beberapa tim sudah mulai banyak yang turun. Oh, di situ ada 2 tim juga yang turun ke Vermont. Di sini ada tim Beast Egg dan tim Injection ya. Di sini kita akan melihat di manakah yang akan unggul. Di sini kita melihat tim 6 ada di seberang apartemen. Kita menunggu untuk pertarungan mereka. Oh, di situ sudah ada tampaknya yang mengekil siapa? Di sini tim 13 tampaknya sedang terkenok, kemudian dua-duanya dikenakan oleh tim 12. Di sini tim Excuse di sini mengungguli pertandingan pada kali ini. Kita melihat dengan posisi mereka tim 12. Di sini ada tim, tampaknya aku tidak melihat nick ini ya pada pertandingan sebelumnya. Aku nggak tahu. Di sini ada juga Equilibrium. Di sini kita melihat tim EQ dari di sini tim 6 dan tim 7 tampaknya. Oh, 16. Oh, yang tadi 6 dan 16. Kita melihat di sini EQ Razor sedang di revive oleh temannya Vipin. Oke, go back Right, to you.
Like, All right then, yeah. and Team EQ is also dropping Chester here, and would be fun to see if they are able to claim it for themselves. I mean, we have talked about Team EQ at length quite a lot of times, but we have still yet to see them claim any chicken dinners here. I mean, it is surprising that a team of this caliber is unable to get any chicken dinners anytime soon. I don't remember seeing them claim any, and I'm sorry if I missed out on it, but I still don't remember it. But let's see if they are able to make something happen in this one, and maybe they are able to break the curse of not getting any chicken dinners, and maybe this will be their break. Sigma, I am looking forward to watching this team perform because I know for a fact that when this team performs together, they can make miracles happen. But at the same time, those miracles are called miracles because they're not that frequent, right? It does not happen that often. Maybe they can convert miracles into consistency, and if that happens, I'm telling you, Sigma, there's no stopping this team. बिल्कुल, डेफ़िनेटली टीम इक्विलिब्रियम बहुत अच्छी टीम है और इन्होंने फ़ाइट लेने की हमको लगता है ठान ही ली है कि आज तो फ़ाइट ले ही लेंगे। टीम नंबर 16 और यहाँ पे टीम नंबर 6 सामने-सामने हैं। फ़िकी, कैन वी हैव फुल गेम प्ले स्क्रीन ऑफ दिस गेम? एंड यहाँ पे अगर बात करें वीपिन की, तो यहाँ पे वो नॉक दिख रहे हैं और इनके ऊपर स्मोक आएगा, डेफिनेटली रिवाइव करना चाहेंगे और दोनों टीम के यहाँ पे फाइट हम लोगों को अब देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे टीम इक्विलिब्रियम तो पीछे नहीं हटने वाली है क्योंकि वो गाड़ी लेके आए हैं, सारे के सारे प्लेयर लेके आए हैं कि भाई इस बार तो फाइट लेंगे ही लेंगे, बहुत हो गया। यहाँ पे हेडेस ने नॉक कर दिया है डार्कनोपी को, डार्कनोपी फिनिश किए जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पहला किल देखने को मिल रहा है। और बात करें यहाँ पे सामने टीम नंबर 16 की, तो उन्होंने अपना एक प्लेयर कंप्लीटली खो दिया है। अब बचे हैं यहाँ पे 3 प्लेयर। क्या लगता है यहाँ पे लाइट की टीम नंबर 16 क्या मूव लेगी या कैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा? Looking at Team Equilibrium's performance, I think Team number 16 should actually back off right now because they are at a man disadvantage or perhaps 2-man disadvantage, and taking a fight right now wouldn't be the best scenario in this case. And yeah, 2 men down, only Loki and God of War remaining. So we'll just call him God. So Loki, who's the god of mischief, and God of War, who's just a plain old god, right? So 2 gods versus the team of Equilibrium. I don't know if they're able to went out some divine punishment here, but they do look like they're unable to save Olympus, and EQ will be taking on Zeus and maybe Loki, or rather Thor and Loki. Let's just call it Thor and Loki. So God of War for today will be Thor and his teammate Loki. Let's see if the brothers of Asgard are able to make something happen. But the brothers will be running away in that amazing little car, which can house only 2 people, but is unable to see the second person being there. So he's just leaving it there. I mean, Loki is known for mischief, and Loki is known for getting away in locations where he's not supposed to be able to go away. But Thor is just flat out leaving his teammate behind. So let's see if his teammate is able to make something happen, or will he go down to the brothers, or rather the team of destruction, that is Equilibrium. And I'm not sure if Equilibrium knows about this fact, or will they just stay there in Chester looting away at their own will, oblivious to what is happening with the 2 rulers of Asgard. Asgard. Jadi maksudnya Loki saudaranya Thor begitu guys. Jadi Thor tahu kan yang dari Avenger. Namanya adalah Loki, di sini Loki. So, di sini Loki masih bertanding melawan tim 6 di sini, tetapi temannya sudah meninggalkan dia untuk lebih memilih kabur dan meninggalkan temannya yang bernama Loki di sini. Dan tim 6 di sini Equilibrium masih menempati posisi di tengah-tengah Chester dengan Loki sendirian yang tampaknya tidak ingin menyerah untuk menghabisi atau menggugurkan tim 6 di sini. Dan tampaknya Loki di sini memilih untuk kabur sajalah karena aku tinggal sendirian seperti itu. Dari pertandingan kali ini kita melihat bahwa di sini Loki yang sendirian tampaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kita akan melihat ke tengah-tengah map. Di sini ada tim TR di sini. TR di True Rangers ya. Di sini adalah tim TR di sini True Rangers dengan berdekatan dengan tim yang berada di mall. Di sini ada tim 7 yang berada di dalam mall, tetapi tampaknya mall sekarang sudah mulai agak sepi ya. Ini dia temannya Loki yang tadi dan memilih untuk kabur menjauhi pertandingan yang barusan terjadi oleh tim sebelah. Dan di sini ada GH
GH di Loganville. Di sini ada beberapa tim yang menuju ke Graveyard. Tim 1 di situ, dan kita melihat ada juga yang berada di ujung zona. Kita melihat di sini ada tim Nati di garisan tim Tryhard kalau tidak salah nama timnya. Dan di sini ada di Pentros ada tim 18 Anahata dengan tim Anahata. Di sini kita masih bisa melihat bahwa players di sini masih ada 66 orang dan sangat sedikit sekali yang baru terjatuh dari fase 1 di sini. Tersisa 3 menit kemudian untuk menempati ke fase kedua, dan kita melihat di sini circle berada di tengah-tengah map. Bagaimana menurutmu Sigma? Sigma, what is your take on the fight so far, on the game so far? बिल्कुल काफ़ी टीम्स यहाँ पे फाइट लेती हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर टीम जीएच की बात करें, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। टीम वीएलवीटी है, टीम एसएमजी है, और यहाँ पे हमको एस्काउंट वाईटी भी मिले, जो कि एक अच्छी टीम, जो एक बहुत ही अच्छे आईजीएल हैं। अगर हम बात करें आरओजी टूर्नामेंट से, जिन्होंने जैसा उन्होंने जिताया अपनी टीम को आगे लेके गए, तो बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे काफ़ी फाइट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक प्लेयर रिक्रूट यहाँ पे रिवाइव होके आ रहा है, DFCON जिनका नाम है। यहाँ पे अगर बात करें अनाहता तमिल, गिल्ली, प्रैक्सी देखने को मिले, इनकी तरफ से काफ़ी ठीक ठाक गेम प्ले हम लोगों को पिछले मैच में देखने को मिला है। बात करें यहाँ पे अगर सर्कल की, तो टीम कुछ यहाँ पे टीम मूव होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर बात करें सनबरी साइड से, तो टीम AM आगे बढ़ती हुई हम लोगों को दिख रही है। और साथ में अगर बात करें ऊपर, हमको एक टीम दिखने को मिल रही है जिसका नाम मैं क्लियरली नहीं पढ़ सकता, तो वो भी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहेंगी। और जल्दी अभी जोन भी घटने वाला है, ब्लू जोन भी आ रहा है, तो सारी की सारी टीमें अभी नया सर्कल बनेगा। तो देखते हैं कि ये सर्कल किधर शिफ्ट लेता है और कितनी टीम जोन के अंदर रहती है, कितनी टीम के बाहर जाती हैं। बात करें अभी अगर प्लेयर की, तो यहाँ पे 67 प्लेयर अलाइव हैं, तो अभी सारी की सारी टीमें यहाँ पे अलाइव हैं। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स अभी हम लोगों ने लूज़ नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट हम लोगों को देखने को मिलेगी। Right, and Like talking about team number 18 right now, it has Praxi and AM, well, basically the team AM, right? And talking about the team AM, they currently have 0 kills, but we have seen them perform in the last match. They were quite good. Yeah. But at the same time, it is fun to see how they all have different vehicles and they're all moving in together. I mean, looking at the meta so far that we have seen with the different teams, they have been going forward. Wait, did I just see Badmashi kill himself with his own grenade? I'm sorry. Yeah, I was just talking about so how good. the things are going down, but man, that was I wish we could have seen that happen in real time. I think somebody knocked him out, and then Badmashi had a grenade in his hand that just exploded right there, and resulted in his own demise, which is funny to say the least. I'm sorry, Badmashi, but that is sort of funny. And Thor here will be inviting his brother back, Loki, onto the battleground, and the battle of Asgard and the gods will continue. But for Team Excuse, Sucha and Resolute, the only 2 remaining players for their team, looking a little desperate for them because, the circle closes in. They will have to find a vehicle, because if they aren't able to get a vehicle right now, Zone will be able to get quite a bit of their HP, because if you look at the zone, I think it is in North Zone. Can we have a look at the zone again, please, so that we can know where exactly the zone is, the new one? Oh, well, it is not that punishing for them, to be honest. It does not look that bad. I think they can make it easily if they try to make a run for it now. And Foggy OP also, I'm not sure if Foggy OP, he is the last remaining player for his team. That's what I was wondering. Maybe he is. And we do see him with a DP, and I'm not sure about the other gun. If we're able to see the other gun from that angle, it would be seen that DP is one of those weapons that people prefer to have with them at all times, because the fire rate, the sheer raw damage that it is able to provide is amazing. It is damn good. It is one of the best LMGs, hands down. But I think the M249 does give it quite a bit of a competition, right, Sigma? Do you think the DP is better or the M249 as far as just raw damage is concerned?
बिल्कुल, अगर बात करें इस गेम की तो मुझे लगता है M249 काफ़ी बेहतर साबित हुई, क्योंकि अब जो अपडेट आया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम M249 को यहाँ पे अपग्रेड करते हैं तो हमारे पास सीड लग जाती है, जो कि अगर आप 1v1 फाइट लेते हैं या किसी एनिमी से आमने सामने अगर फाइट लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुलेट से बचाता है। तो डीपी वहाँ पे वो काम नहीं कर पाती, बट डेफिनेटली अगर आप डीपी को अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप 73 या 72 आई गेस बुलेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक M249 के लेवल की गन बन जाती है। बट हाँ, अगर आप M249 को अपग्रेड करते हैं तो वहाँ पे आप 150 बुलेट ले सकते हैं या तो आप सील्ड ले सकते हैं। तो दोनों की अपनी खासियत अलग है। बट हाँ, डीपी में एक चीज़ है कि यहाँ पे आप अच्छा यहाँ पे स्प्रे दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर बात करें, टीम बीस्टेड ने यहाँ पे टीम नंबर 5 को स्पॉट किया है और उनके ऊपर कुछ फायर शॉट्स किए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। टीम 5 यहाँ पे जल्दी से जल्दी निकलना चाहेंगे, सारी की सारी टीम सेफली निकल गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे टीम बीस्टेड अभी वहाँ पे बैठेंगे। डेफिनेटली देखना होगा कि यहाँ टीम नंबर 5 कहाँ पे रुकती है, कहाँ पे ये अपना एक बेस बनाते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा ये अपना एरिया कवर करेंगे, जहाँ पे रुकेंगे और वहाँ से फाइट लेना चाहेंगे। लाइट कंटिन्यू। Right, and looking at team number 5, Crawlers, here's the thing. Crawlers, I believe most of the players have been playing a different game recently. I think it was Apex Legends that just came out yesterday, and it was a fun game, not gonna lie, but I still don't think it'll be able to take over New State, honestly speaking, because New State is just so much different than that game. I mean, yeah, I think we can go into a deeper analysis later on, but Capote will be going down, definitely will be going down, and Team 11 with only 2 players remaining will have to probably get away from here as soon as possible, because those bullets, one more bullet to War Machine and he will be taken down as well. So Tej has to be careful here. I mean, one of the things that the opponent team should have been doing is aiming for the tires of that vehicle, of the Volta, so that the Volta will be rendered immobile, right? And if you are able to pop even just one tire, I don't think, Fiqi, that the team would have been able to run away as they did now, right? Ya, tapi tampaknya di sini voltanya sudah kempes, banyak beberapa ban di sini yang sudah ditembak. Yo, di sini voltanya juga sudah terlihat bahwa volta tersebut akan meledak, diledakkan oleh tim dari 10 di sini. Kita akan melihat di sini ada War Machine yang terkenok, tampaknya dikenoki oleh tim dari 10 dari kejauhan. Dan di sini Tej merevive temannya. Oh, kita melihat ada tim Crawl. Tampaknya di sini berlawanan dengan tim 1. Tim 5, tim Crawler dan tim 1. Oh, kita melihat tim 1 di situ tampaknya memilih untuk pergi berlindung ke dalam di bawah bukit di sini, dan bisa kita lihat bahwa tim 1 di sini tersisa 3 players saja di sini dan 1 telah tumbang. Kita akan melihat dari tim sisi Crawler. Di sini tim Crawlers, oh, di situ ada Fiqi yang tampaknya terjatuh dan terkena sendiri dari kill message. Dan di sini kita melihat tim Crawler yang masih full dari timnya yang sedang mengintai-ngintai dari tim Yasho di sini. Ya, mereka bertiga pun tampaknya sama sekali tidak kekurangan percaya dirinya dalam bertarung kali ini. Kita melihat di sini tim 1 Leven Gaming sudah terkenok dan di-revive oleh temannya. Dan kita melihat dari full map di sini ada blurry. Kita melihat blurry. Oh, di sini dari tim 7. Oh, tampaknya blurry merevive temannya di sini. Kita akan melihat kembali dari tim 1. Tim 1 Leven Gaming sudah menghealing dirinya sendiri, dan kita melihat tadi adanya pengekilan dari tim lain. Aku susah sekali ya memanagenya karena di sini timnya sangat banyak sekali. Di sini tim India ada 19 orang dan tadi beberapa ada yang membocorkan juga. Jadi bukan di Indonesia aja, tetapi di India juga ada beberapa tim yang membocorkan password. Sama aja, sama seperti di Indonesia juga seperti itu. Aku heran kenapa. Padahal ini adalah pertarungan dari final untuk menuju ke international Scrim, tetapi beberapa dari mereka juga ada yang membocorkan password dari
room yang sudah aku berikan. Tidak di Indonesia, tidak di India, sama aja. Sama-sama suka bocor. Kita melihat di situ crawler tim 5. Oh, di sini tim 5 terkenok 2 di sini. Kita melihat dari tim 1 kah yang mengkenokkan mereka ataukah ada tim lain yang mengkenokkan mereka? Tampaknya tim 1 sih dari sini. So go back to you, like. And here we see Team Crawlers take down another good team, and I think in the opponent there was Escon YT, who led his team Random 4 to the winning position of ROG tournament that happened quite recently, and unfortunately they did go down. They died just now to Crawlers, and so it is just unfortunate that that happened. I mean, Crawlers have been improving steadily, and you know what they say about the tortoise and the hare, the story about them, right? And for those, I think everybody's heard about that, but I would just like to reiterate it: slow and steady wins the race. But it may not always be true, guys. This is not a game where the slow and steady will always win the race. Here, you need to be fast because those people are coming at you with Voltas, and they're coming at you with the M249s, the Vectors, and all of those things, right? So you have to be really fast as well. Sometimes if you're just slow and steady, you may just die to the blue zone. So definitely Team 18 will be rushing in here, and they do have Team Crawlers in the vicinity. If they are able to pick a fight and win it with them, they will have my respect. I mean, killing anyone here at this point is amazing, considering they all qualified to be here. They put themselves through a lot of hard work and a lot of practice just to be here. So yeah, taking down anyone at this point is amazing. A really good grenade stage, but won't be able to have any damage from that point on. At the same time, yeah, it was difficult for him. He is on the rooftop like the monkey that he is, and there are two enemies right there, one with a Groza, so Superman with a Groza, and let's see if he's able to make use of that super gun. So Superman with the super gun, let's see if he is able to show us some super plays. So can we just look at Superman and try to see what's going on through his head I segment? can what? Oh, Team 18, Superman. What just happened here? What I'm not just- sure, guys. Can't connect to the server. I don't know why. What's going on Okay. with Newsted today? So guys, this is what happens sometimes, and I am glad that this is not I am glad that this is not being streamed on an international platform, as in like we don't have prize money and such, because you can only imagine what happens here. I mean, it's all good. We will probably be just speculating at this time which teams are most likely to win, because we did see Team Crawlers be amazing at what has been happening. I mean, they have taken down almost 2 teams at this point, so that was really fun to see. And we have also seen team, I think it was Javix's team, which went down, and he had the Thompson. And here's the thing about the Thompson, guys. Thompson is really good in that close range, and it is amazing to be able to control it. The raw power that you feel from it, it's just legendary. It's spectacular, and I think we will be able to head back into the game to show you exactly what is going on. And it would be fun to see if Team Crawlers is able to show us some more kills coming in from their side. So luckily, guys, we are able to make it back inside, and yeah, we are back. We are continuing with the action. Just a little glitch there, no need to worry about it. In the meantime, we do see Team XQs almost getting wiped out, and Team Equilibrium there with a really nice controlled sprays try. I mean, it was a try. It's not successful, and you know, he's just giving up at this point. He's like, well, you know what? If the spray is not gonna connect, I'll just try the one bullet taps. And Sigma, do you think the one bullet taps actually work, or do you think that is just something that will never happen? नहीं, अगर मैं बात करूँ वन टैप की, तो वन टैप डेफिनेटली काम करता है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा। बात करें अगर बैरल की, तो बैरल का वन टैप थोड़ा सा हार्ड बनता है, बट अगर यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे अगर बात करें डीपी की या कुछ अन्य गन की, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा काम करती हैं। बट इन द मीन टाइम यहाँ पे लेबनेंट गेमिंग हमको यहाँ पे नॉक दिख रहे हैं, साथ में जिनकी बात करें अगर टीम नंबर 1, सामने हमको बदमाशी दिख रहे हैं जिन्होंने इनको नॉक किया है, और यहाँ पे यस भी नॉक हो चुके हैं, और डेफिनेटली टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन डेफिनेटली ओ माय गॉड, यहाँ पे इंजेक्शनल भी यहाँ पे नॉक हो गए। आई डोंट थिंक मैंने गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ राजपूत यहाँ पे हम लोगों को फुली यहाँ पे दिख रहे हैं, फुली हेल्थ के साथ। डेफिनेटली अपने प्लेयर को रिवाइव करना चाहेंगे। अगर ये अपने प्लेयर
प्लेयर को रिवाइव कर लेते तो यहाँ पे इनको हल्की यहाँ पे सफलता मिल जाएगी, बट वहीं पे यहाँ बदमाशी को भी नॉकडाउन किया जाएगा, बदमाशी को फिनिश भी किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी अगर वो टीम सामने वाली अगर रश कर देती है तो डेफिनेटली इनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और यहाँ पे लेवनेंट गेमिंग यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, ये अपने आप को हील करेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ के अपने प्लेयर नंबर 4 को रिवाइव कर पाते हैं या नहीं। वहीं पे अगर बात करें टीम नंबर 10 की, तो यहाँ पे हम लोगों को मैवरिक नॉक दिख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेयर ऑक्टोफेज यहाँ पे नॉक दिख रहा है, और यहाँ पे वो उनके ऊपर स्मोक करते हुए डेफिनेटली उनको रिवाइव करेंगे। और यहाँ पे स्वैग हमको अलग ही खेलते हुए दिख रहे हैं। पिछले मैच की बात करें तो स्वैग यहाँ पे काफ़ी रिवाइव कर रहे थे, लेकिन जोन द्वारा फिनिश किए गए थे, अपनी टीम के लिए थोड़े से सर्वाइवल पॉइंट बढ़ा के लेके गए थे। अभी ये जोन में है और ये जोन इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, तो यहाँ पे इनको फटाफट अपने आप को हील करना पड़ेगा और जोन के अंदर भी निकलना पड़ेगा। और मुझे वहाँ पे कोई व्हीकल दिख तो रही नहीं है, अगर इनके पास कोई भी व्हीकल नहीं हुई तो हो सकता है कि ये जोन द्वारा ही फिनिश किए जाएं, क्योंकि ये जो जोन है, जो ये जोन अब टच करेगा, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है। तो सभी की सभी टीमों को जोन के अंदर तो आना ही आना होगा, या तो उनके पास अनलिमिटेड हेल्थ हो। अगर वहीं पर बात करें टीम नंबर 16 के, तो यहाँ पे लोकी हमको सामने दिख रहे हैं और उन्होंने स्पॉट किया टीम नंबर 14 के एक प्लेयर को, साथ में उनके एक प्लेयर और नॉक यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ में यहाँ पे रिफ्लेक्सर निकल के बाहर जा रहे हैं, एक केव के अंदर इन्होंने अपनी गाड़ी को सेव करके रखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे वो फाइट लेते हुए दिख रहे हैं टीम नंबर 16 के प्लेयर। सामने हम लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे गॉड और वॉट ने यहाँ पे 2 प्लेयर के ऊपर क्या ही ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक को नॉक कर दिया, एक को यहाँ पे हल्का डैमेज मिला है, लेकिन गॉड और वॉट पिक किए जाएंगे सिन के द्वारा, और सिन ने यहाँ पे ड्रैगन ओकी को फिनिश किया है, और यहाँ पे आंधी यहाँ पे जोन द्वारा फिनिश हुए हैं। आई थिंक लाइट कुछ गड़बड़ हो गया। अगर बात करें यहाँ पे अगर हम मैजिशियन की, तो मैजिशियन की अगर टीम जीएच की, तो पिछली बार हमको इनको काफ़ी अच्छा गेम प्ले मिला। इनके 2 प्लेयर बार बार नॉक हुए थे, जिनसे इन लोगों ने 1v4 कई टीमों को 2 टीमों को किया था, तो इन्होंने बार बार अपनी टीम को रिवाइव किया था। तो मैजिशियन की तरफ से काफ़ी अच्छा गेम प्ले मिला था, मतलब ओवरऑल टीम जीएच की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली थी। और यहाँ पे अगर बात करें टीम 5 क्रॉलर्स की, तो ये हमको गाड़ी लाते हुए हाई रेंज यहाँ पे एडवांटेज लेते हुए दिख रहे हैं। सामने जोन है और साथ ही इनके सामने एक टीम देखने को मिल रही है, मुझे नहीं पता है कौन सी टीम है क्योंकि मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ। साथ में डीपी के 6x से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे 1 टैप डैमेज दिया जा रहा है, साथ में कुछ ना कुछ तो डैमेज पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली क्रॉल की तरफ से काफ़ी अच्छा हम लोगों को फाइट देखने को मिलेगी, और इनके 8 किल भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। Right, and looking at team crawlers again, we have been talking about them quite a lot during this match, and they are outside the zone. Perhaps it is time to move in. It won't be easy considering it's an open field. There is a bit of a height advantage that you can get by being on the left side of the zone, but it is already being taken over by another team. And Octophage does not have any healing. He is racing against the zone. And I don't know if he'll be able to make it, and definitely not. He will be taken down by the zone, unfortunately for him. If he was just 1 second earlier, he could have made it. But at the same time, we stayed, will take down another team with a grenade. It was a really good grenade, by the way. We're unable to capture it for you, but I'm pretty sure it was brilliant. At the same time, we have so many teams. I believe 29 players alive right now, and Fiqi is going to heal himself and his teammate. He has 0 first aids, just a little bit of boosters, and he is spotted out, and he has nowhere else to go. As soon as he walks out of that door, he will be getting shredded by bullets, if not grenades and the like as well. And team number 4, all of the players alive. I believe this is team VLBT, but it also has players from other teams, so it's a hybrid team. It's a hybrid team, Sigma, and we have seen team hybrid. I mean, we'll just call them team hybrid at this point, because why not? Ferocity did get taken down. It would be fun to see if it was all crawlers that went down or it was just one team. But what is your take on the fight so far, Fiqi? Ya, di sini tampaknya tim 4 melemparkan granat yang cukup cantik untuk mengalahkan tim yang baru saja memasuki daerah area kekuasaan mereka menggunakan mobil Volta. Kita melihat di situ dengan crawler yang dari tadi sudah kita sebutkan, tim crawler dari tim 5 yang merupakan tim yang cukup baik permainannya pada match kali ini. Dan tetapi sayang sekali di sini tim 5 hanya tersisa 1 player saja, dan kita melihat dari sisi kiri ada tim dari 4 tim VLVT Esport di sini masih dengan full tim di sini. Dari kejauhan ada tim 14 GH Green Hydrogen di sini dengan kill 3 menggunakan AKM sebagai senjata utamanya. Dan kita melihat tim yang sedang berperang pada kali ini
ada tim satu yang dispray dari kejauhan dari tim, tampaknya tim tim 2 di sini juga sedang berperang melawan tim kuning GH di sini. Oh, Fiqi lagi-lagi temannya yang harus tumbang di sini dan segera di revive oleh temannya. Kita akan melihat dari kejauhan di sini dengan tim Imagician. Kamu seharusnya masuki pos itu karena mereka berada di sayang sekali dari belakang Fiqi dan datangi kembali oleh VLVT menggunakan mobil. Kita melihat di sini ada Untravel OP di sini ya, Untravel OP dan Tusar di sini menggunakan mobil dan tersisa 8 player lagi yang hidup pada match kali ini. Ada tim 1, tim 17 dan tim 4. Back to you, like. What do you think about this? Right, so it is a very intense situation with a very small place to be in, and team number 4 has all the 4 players, and Rajput, the lone survivor for his team. I think it was team 17, the green players. They also have 2 players, so it is a 1v2 v1v4. It is a fun situation. Definitely, Rajput does not have. Well, it does not look like he has a lot of chance in this one because Team XR will be laying down the smokes. They will be laying down a lot of pathway for them, and he is spotted out, so it does not look likely that he will be able to survive until the very end, because if he fires, then both the teams know his location. He's not in the zone, so that's definitely a disadvantage for him right now. If he's able to get the vehicle though for them, just that vehicle, if it goes down, then they will have no cover. He should not take a fight right now, I think, but yeah, the opponent's team is taken down one by one, and Numan is unable to open the door for some reason. And will he get trapped in here? Will he get taken down? Now the door's open. Now he has the leeway, but he won't be able to use it anytime soon because Norman with that DP spray will be able to take down Numan and Nutty God, I believe his name was earlier. Now it's just Nutty Oo. So Nutty Oo, very interesting name there, Nutty Oo. Just 6 first aid, so definitely a really nice situation to be in for a heal battle, and Norman will be able to take that Volta for himself. He has just 1 first aid, and I think he used it as well, so Rajput has to rush into the zone or get some players down. Unfortunately, even though he did get 1 player knocked out, it won't do him any favors, and we do see team 4 win this one almost. Nutty U with so many first aids. I'm just waiting for him to make something happen. He's going to go for it, but he won't be able to make it because Zoid OP with that SLR, and the SLR gets the last kill. We have team 14, or rather team 4, my bad. Team 4 with the chicken dinner here. Really good strategy that they use with the vehicles, and Troy is known for the vehicle usage. So if you can get it down like this team has, then you will be able to get so many chicken dinners for your team. Right, Sigma? बिल्कुल यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे जो व्हीकल मेटा चलती है गेम में, आपके पास व्हीकल होनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करें टीम हाइब्रिड की या VLVT जिसको हम पहले बोल रहे थे, यहाँ पे 15 किल्स, अगर पिछले मैच की बात करें आई गेस 14 किल्स थे, और इस बार हम लोगों के पास सारी टीमों के यहाँ पे लिस्ट हम लोगों को मिल चुकी है। यहाँ पे टीम X 6 किल्स के साथ है, टीम नंबर 8 0 किल्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिली है। टीम नंबर 4 जो कि है टीम VLVT, जिसको अब हम लोग हाइब्रिड बोलने लगे हैं, टीम हाइब्रिड, इसकी तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। Ya, kita melihat di sini tim 4 yang memenangi pertandingan kedua kali ini dengan kill yang sangat banyak di sini. Mereka tim 4 mengekill 15 dan itu lumayan pencapaian yang sangat cantik di sini ya. Dengan Zuid OP di sini. Tim VLVT Esport di sini mengekill 15 dan ada tim Nati menyusul dengan tim Nati, tim 17 mengekill 3, ada tim 1 kill 5, di sini juga ada tim 2. Kita melihat di sini mereka adalah tim-tim yang sangat baik pada pertandingan kali ini karena mengingat mereka adalah pemenang dari match-match sebelumnya, dan di sini mereka juga sudah berjuang keras dari pertandingan kali ini dengan 19 tim yang melawan sesama negara. So what do you think about this match, like? Well, we'll start with Sigma because I don't think he got a lot of time here. So Sigma, what's your take on the game? Because I enjoyed it so much.
या बिल्कुल, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस गेम को देखकर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक चीज़ है, अगर बात करें यहाँ पे कार मेटा की, तो यहाँ पे कुछ टीमें तो कार मेटा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हुई देखती आ रही हैं कि जो कार लेती हैं और कार के साथ फाइट लेती हैं, जो भी टीम उनको बिना कार के खाली दिख जाती है उसको वो छोड़ती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम को और बनाना चाहती हैं, या कुछ टीम्स ऐसी हैं जो एग्रेसिव फाइट लेना चाहती हैं, उनको यहाँ पे कार मेटा पे ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एनिमी खुले में घूम रहा है और अगर आप कार से हैं आपकी पूरी स्क्वाड, तो वो टीम तो बिल्कुल नहीं बचने वाली है। और यहाँ पे कई सारी टीमों से हम लोगों को कार फाइट या कार मेटा का यूज़ करते हुए दिखा, तो मैं उसके लिए, मुझे वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी यहाँ पे लास्ट में अगर बात करें तो राजपूत काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे, बट डेफिनेटली उनको मौका नहीं मिला। और साथ में यहाँ पे 15 किल्स के साथ टीम हाइब्रिड का गेम प्ले बहुत ज़्यादा शानदार था। डेफिनेटली और टीम को आगे आने चाहिए, कुछ और अच्छा गेम प्ले हम लोगों को उम्मीद है कि टीमें और अच्छा भी बेहतर और करेंगी। बाकी यही है, लाइट कंटिन्यू। Right, and talking about my favorite moment at the time in the whole game was when Team X's Newman was in that little shack, right? And the door just did not open. He was punching at the door, he was trying to get it open, but the door just did not open, and the ya ya zone ya came in, and he was unable to run away. That was just sad to look at because he had zero first aids, right? And he just saw death approaching. The door just wouldn't open, and when it did open, he got shot down. So really unfortunate to see that happen. It's sort of funny when that happens when you get to see it, but it is not a funny place to be in when you're facing that situation. I mean, I'm sure Newman must be really scratching his head, pulling his hair out. Not a good scene to witness, but it is definitely funny to watch, and we are having a laugh at his expense. I'm so sorry, Newman, if you're watching this, but that was just really funny to watch ya that you were punching at the door and the door just did not open. So yeah, guys, this is the match. This was the final match for today, and this we have to thank Fiqi for this because Fiqi, thank you so much for giving us the opportunity to practice with our teams, try out new strategies, and all of the sort. Because this is what you need to do before you actually go into a tournament, a proper ya tournament that the whole world will be watching. So, joining me to okay, so let me just reintroduce myself. So my name is Light. My channel is Lightcast, and joining me today is Sigma from Sigma Plays. If you like the stream, if you liked what you saw, then definitely like the stream. Subscribe to the channel because we will be now coming in with the teams on an international scale, on a global scale. And Yes. even though this will be sort of restricted to the Southeast Asia region, it would be fun to see because you know how different teams perform. I mean, Indian teams have a different mindset, and teams from Indonesia, from Malaysia, they have different mindsets as well. So, how will that all play out when they all go together head to head in the battlefield? Stay tuned, press the bell icon so that you can get to know what happens when all of those go against each other. Definitely something that you have to witness, something that you have to watch with your eyes glued to the screen. Right, Fiki? It would be so much fun to see that happen. So, yeah, Ya, Fiki, over to you for the last word of the day. ya, jadi kita akan melanjutkan ke match ketiga kali ini, dan kita akan rehat sekitar 10 menit saja. Jadi jangan kemana-mana guys, kita akan kembali dalam 10 menit. So, ya.
Go. Hello, Alright, guys. guys, welcome back. Welcome back, welcome back. This is the third and final match, and I'm so sorry about the mistake earlier. I did say the last match was the final one. So, no, that's not true. This is the final one. And I think we're missing a whole team here. I'm not sure which one it is, team number 8. I'm not sure which one that was supposed to be, but that is missing here right now. And most of the teams have made it in so far. So, it would be fun to see what happens the future. Do you think Team B State with 2 players missing will be able to show the best performance that they could? I mean, they are team number 3, so they do have the magic coming in. But will that magic be enough for 2 players to win against a whole lobby of tryhards, of sweaty tryhards? Do you think that will be able to do something, Sigma, here? 2 प्लेयर्स के साथ टीम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। अगर बात करें टीम बी स्टेट की, तो ये अभी 3 प्लेयर के साथ ही हम लोगों को पिछले दोनों मैचेस में आई गेस दिखाई दिए थे, जिसका नाम था आई गेस माधव, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका वो नाम था। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कोई नॉर्मल क्लासिक लॉबी नहीं है जहाँ पे मतलब तुम इजीली खेल लोगे। यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर रियल होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी पूरी टीम के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा पहला मैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो टीम के साथ तो डेफिनेटली आपको होना चाहिए, क्योंकि आप डिसएडवांटेज में हो जाते हैं, सो वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव ले जाता है। और क्योंकि यहाँ पे आज दिनों कार मेटा चलता है, अगर आप कार से जा रहे हैं, अगर कोई स्क्वाड आपको कार से रस कर देती है, कार से आपके साथ फाइट होती है, देन वो फाइट वही जीतेगा जिसके पास ज़्यादा प्लेयर होंगे। क्योंकि एक ड्राइवर हो गया, देन आप अकेले अगर यहाँ पे अगर आप गन चला रहे हैं, तो अकेले आप क्या ही कर लेंगे। अगर 3 प्लेयर आपके ऊपर गन चला रहे हैं, आपके ऊपर बुलेट्स फेंक रहे हैं धड़ाधड़, एंड आप अकेले फेंक रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में चलेंगे। तो इस बार देखना होगा कि टीम 3 क्या करती है। मतलब अब 2 प्लेयर्स के साथ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको संभल के खेलना होगा। यहाँ पे इनको फाइट बच के लेना होगा, ज़्यादा रस नहीं कर सकते, ज़्यादा टीमों के साथ उलझना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो डेफिनेटली जितनी भी अगर टीमें अभी हमको नहीं पता चल पाया कि कितने में पूरे के पूरे प्लेयर हैं, किस में कम हैं, तो वो होगा। अगर बात करें यहाँ पे प्लेन पाथ की, तो यहाँ पे प्लेन हमको पोर्ट से जाता हुआ बी एरिया की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में एग्जिबिट हॉल, एंकर विलेज, श्वानचन, हिलयार्ड, पेनरोज, चेलर पार्क, यहाँ पे दूसरी साइड बात करें चेस्टर मॉल, मेशा और कॉर्नवेल, वर्मॉन्ट, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार हमको लगता है कि जो अपर हाफ है वहाँ कुछ टीम्स ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा जाती हुई दिखाई दें। लैब एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी अच्छी लूट, आपको कैश और लूट देखने को मिल जाती है, तो वो भी एक अच्छा प्लेस है, काफ़ी प्लेयर से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेनरोज की तरफ कुछ टीम जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पोर्ट साइड हम लोगों को 2-1 टीम जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वेल, कुछ पोर्ट जाएंगी, कुछ उससे आगे भी जाएंगी। और एग्जिबिट हॉल इस बार भी मुझे लगता है कोई नहीं जाने वाला है। एग्जिबिट हॉल सभी के सभी कैंसिल करते हैं, कोई जाना नहीं चाहता। जो स्टार्टिंग में उतरी थी वो पेनरोज से आगे जाती हुई दिखा रही है। यल्ला, कंटिन्यू। Yeah, but I do think we are going to see one team go towards Exhibit Hall, and it would be nice if they do know about the treasure in Exhibit Hall. And for those that don't know, there is actually a treasure spot in Exhibit Hall, and I'll tell you exactly when they land in there. So, do you see the middle area, the middle tower sort of display thing, right at the center, right at the very center of Exhibit Hall, right? If you look at it, you will be able to see it from everywhere in the exhibit hall. It's at the right center. It's exactly at the center of the exhibit hall. So if you look at the exhibit hall and you look at the center, you will see that building, and on top of that little tower is actually a green flare gun or a red flare gun, a 6x scope or something of that sort. So it's always good to know that there is a secret there, but not a lot of people know how to access it. And if you want to know more about it, you can definitely try to hop around and you will be able to find a way there. But in the meantime, we will see excuses Sucha. I don't know where he's trying to drop, but we will be able to see Team Equilibrium in their home spot in Chester. So yeah, let's see if Team Equilibrium is able to make some magic happen here again with the drop clash against Team DE. And is it Team DE completely, or do we have another hybrid here? I mean, we have 2 players from Team DE, that is Destiny Sports. It is not Diode anymore, so keep that in mind. Also, Reaction's team is now True Rippers instead of Team SMG. So it's not official, guys. They are just using the name right now. Don't get too excited. They're not currently sponsored, and I just clarified this earlier. But in the meantime, we will see Wiggle's parachute wiggling quite a bit, and he will be able to get to that Volta. But that was a
great wiggle to experience and to witness here. Let's see what skin he has of the Volta, and I believe this is the gold skin, isn't it? Yeah. I mean, I tried so hard to get this one, Fiqi, but this gold skin was just so difficult to get. Did you get it yourself? Do you have this one? No, I don't get this one yet. Uh, no, I only got the Halloween one. You remember there was this Halloween Oh, one? I There know, were I know, I two know. vehicles. Yeah, 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 so yeah, that yeah. is the one I got. I Oh, got that that's one. Which vehicle skin do you have? yeah. Halloween also. Remake. Uh-huh. That one. That one. I Well, also got that which one. remake did you get? Which color remake did you get? Gray, gold. I get two. You got two. Yeah. Nice, nice. I only got the black one, the gray one basically. Yeah, I I love the got new this that skin. one. I love the new skin. Oh, Mm. which one new skin? Oh yeah, That I definitely. use. Yeah, they are so good. Oh. And in the meantime, we will see TR going against. Well, I'm not sure which team this was. Yasho, I believe it was Yasho's team. And I'm not sure if the entire squad is wiped out, but definitely True Repairs with the first kill in the game. I mean, not sure. No, the first kill actually went to someone else when Roach went down with that vehicle. Or did Roach kill himself? I'm not really sure. But TR definitely has a green flare, or is that a red flare? We're yet to see. We're yet to find out. But I think TR definitely has a flare gun with them. So let's see which one it is. And if it is a red flare gun, they do have two teams around them. But then again, it is the early game. So in the early game, yeah, it is a red flare gun on Starboy. We just did witness that. So if they shoot it now, I don't know if teams will be coming in here to get the drop, because I don't think teams want to take that fight in the early game, right, Sigma? बिल्कुल अभी भी कोई भी टीम अर्ली फाइट कोई नहीं लेना चाहता। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें या हम कई मैचेस को अगर यहाँ पे देखते आएँ तो यहाँ पे अर्ली फाइट कोई नहीं लेना चाहता। टीम पास पास भी होती है, कोई नहीं फाइट लेना चाहता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग एक ही घर पे दो एक टीमें कूद पड़ती हैं आसपास के घर में, और अगर गन किसी को स्टार्टिंग में मिल गई तो वो चाहता है कि यार सामने वाली टीम के पास तो अभी कोई लूट होगी नहीं, अगर मैं अभी किल ले लूँ तो क्या ही रहेगा। और इसी चक्कर में दोनों टीम आपस में लड़ पड़ती हैं, और जिस टीम जिसके पास एडवांटेज होता है, आई मीन गन का ही एडवांटेज होगा क्योंकि जिसको गन पहले मिल गई वही यहाँ पे किंग हो जाती है, तो वो डेफिनेटली अदर टीम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो अर्ली फाइट तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अगर आप किल पा गए तो आप तो बहुत खुश, आपको एक कि अगर आप अर्ली फाइट ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा पावर फील होती है आपको। जब आप अगली फाइट लेते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कभी यहाँ पे बिना फाइट लिए खेलते रहते हैं तो होता क्या है कि जब आप अचानक से कोई फाइट लेते हैं तो वहाँ पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो यही होता है जब हम लोग कोई एक एग्रेसिव टीम को देते हैं, जो टीम एग्रेसिव जाती है अगर वो लकी होती है तो वो बहुत ज़्यादा किल लेके आती है। तो यही होता है। और एक जो टीम पैसिव होती है तो उसका हम लोगों को फुल परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अर्ली फाइट में फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। दोनों चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए और देखना चाहिए अपने आप को कि अगर आप एडवांटेज में है तो डेफिनेटली आप फाइट लें, नहीं तो आप बचने की कोशिश करें, सर्वाइव करें, क्योंकि ये गेम सिर्फ किल्स का नहीं है। यहाँ पे आपके सर्वाइवल पॉइंट्स भी मैटर करते हैं और सर्वाइव करेंगे, आगे फाइट ले लेंगे तो वो भी आपकी टीम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। Right, so Fiqi, so far in the game we have seen some fights go down, but do you think we will see more fights as we go along? Ya, di sini kita melihat bahwa pertandingan kali ini dan dari yang sebelum-sebelumnya itu sangat sengit sekali. Oh, di sini Blurry sudah kehabisan bensinnya atau bahan bakarnya pada kali ini, dan dari pertandingan yang sudah mereka itu kebanyakan lebih memilih bermain aman ya atau camping. Mereka itu lebih memilih camping daripada barbar dari pertandingan kali ini. Dan kita melihat bahwa di sini zona menurun sedikit, berada di bawah zona, dan kita melihat bahwa di sini sudah memasuki fase ke-1 dan 4 menit kemudian kita akan berganti ke fase kedua dan zona akan memulai untuk berjalan. Yang kita tahu di sini masih ada 63 orang yang hidup dan sudah 7 menit berjalan pertandingan ini, tetapi masih banyak sekali players yang masih hidup dari pertandingan kali ini dan sedikit dari tim yang sudah tereksekusi semuanya. Belum ada satu tim yang benar-benar tereksekusi. Adanya juga
seperti dari tim satu yang tersesat satu dan lebih memilih untuk berjalan-jalan menggunakan mobil dari tadi kita melihat, dan tampaknya dia agak sedikit berada dalam kesalahan jika tim satu menyamperi tim crawler pada pertandingan kali ini, karena yang kita tahu tim crawler merupakan tim yang cukup baik ya dari pertandingan yang sudah-sudah. Di sini kita lihat bahwa tim 10 baru saja menghidupi temannya, dan di sini tim 19 dari tim Daku juga menggunakan mobil, mengkonvoi. Ya, kalau di sini enaknya kalau dari map Troy di sini kita bisa lihat berapa banyak yang menggunakan mobil pada pertandingan kali ini. Oh, dan benar saja tim 1 akhirnya terbunuh oleh tim 5. Sayang sekali tim 1 karena kamu harus gugur pada pertandingan final match ketiga pada kali ini. Dan ini adalah match atau yang terakhir ya buat yang baru join atau yang belum tahu bahwa ini adalah pertandingan yang terakhir. Kita akan melihat kembali kepada like. Right, and looking at team crawlers, right? They did have really good amount of kills. So last time I think it was definitely above 8 because in the mid game it was 8. So definitely they had more kills than that. At the same time, I think they are trying to rack up on as many kills as they can early in the game. I mean, I was talking to them earlier, and it seems that a really good strategy in this game would be to get as many kills as you can early in the game and then just wait it out to get the position points as well. So be safe, but at the same time be aggressive. Now how that works out is know when to take a fight and know when to fall back. And as soon as you are able to do that with a little bit of gunplay and a decent amount of game sense, then you will be able to rack up quite a few points early in the game. And we see them take a fight against Team 18, and let's look at Team 18 and how their perspective is so that we are able to spot out what they see. And Team Anahata here, I believe it is Team Anahata, and they have one player down, and it's the same thing as Team Crawlers because it's all 3 versus 3, but Team Crawlers doesn't know that Team Anahata only has 3 members, and nor does Team Anahata know that Crawlers has 3. So it would be fun to see how they assume that the 4th player is still alive and at the same time approach it like that while being on the defensive because they are unsure of whether to take the fight right now or not. Maybe if they get one knockout, they will be able to equalize it in their head, and so they will be able to move forward. But in the meantime, will go down to a grenade from team, I'm not sure which team it was. I think it was one and only grenade. Yeah, it was one and only with that really good grenade, and Zoid OP, the only remaining player for team number 4, will go down to the Molly most probably because he is sitting in there, and Molly does quite a bit of damage even later. But he will go down to the Molly. And if not, if it wasn't that, then the grenade definitely landed right in his face. I mean, he did go down right before that, but if the grenade was like a split second earlier, Team EQ, which is really good use of those utilities, and they're able to show us just how to do it. How does a professional team do it? And that's what I was talking about. Team EQ, we expect great things from you. Unfortunately, still they did not make it to the last zone last game. Now Sonic from Team Crawlers is going to drink up. He is going to get those boosters, getting ready to get in the fight. And I think there is another fight going on. So will they be able to third party? Because I think third partying is really good in this game, right, Sigma? बिल्कुल, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदेमंद भी होती है। अगर मतलब थर्ड पार्टी होती वही है कि 2 लोग फाइट कर रहे हैं, वो डैमेज हैं और आप थर्ड पार्टी करके अपने लिए किल निकाल पाते हैं, अपने लिए फाइट ले पाते हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी देखने में भी बहुत मज़ा आता है और जो थर्ड पार्टी करता है वो भी मज़ा आता है। इन द मेन टाइम अगर बात करें सुपरमैन, तो सुपरमैन यहाँ पे एक थोड़ा डैमेज देते हुए लेकिन यहाँ पे नॉक नहीं कर पाए हैं यहाँ पे टीम नंबर 11 के एक प्लेयर को, लेकिन दोनों प्लेयर हमको रश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया है, यहाँ पे उन्होंने शोल्डर में उसके यूज़ किया है, शोल्डर मोड भी बहुत ही अच्छा है, और एक प्लेयर घर के अंदर है। आई डोंट थिंक इन्होंने स्पॉट किया, लेकिन स्पॉट किया फटाफट, लेकिन टीम नंबर 11 के उस प्लेयर ने इनको नॉक कर दिया है, जो कि है तेज ने इनको नॉक डाउन कर दिया है और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा था। लेकिन अगर बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन की तरफ से अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। उन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया, हल्का डैमेज तेज को भी दिया, लेकिन उनके पास एक अच्छा कवर जब था तो डेफिनेटली वो यहाँ पे अपने लिए यहाँ पे अच्छे किल ले पाए, और यहाँ पे जैसे उन्होंने फिनिश किए हैं तो डेफिनेटली उनको इतना पैसा मिल गया होगा कि वो अपने एक प्लेयर वार मशीन को रिवाइव कर पाएंगे। इन द मेन टाइम अगर बात करें टीम क्रॉलर की, तो यहाँ पे इनके दो प्लेयर की कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है,
और ये यहाँ पे घर पे अभी बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक इनके पास, हाँ डेफिनेटली इनके पास टीम बी स्टेट है जो कि 2 प्लेयर्स के साथ हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनको पता है अभी तक टीम क्लॉरर क्लॉरर को कि यहाँ पे 2 ही प्लेयर हैं, दोनों तरफ 2v2 होने वाला है। तो डेफिनेटली देखना होगा कि क्या गेम प्ले देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बात करें दोनों टीमों की तो दोनों टीमें डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग टीमें हैं, और 2v2 की फाइट है, इक्वल फाइट है, तो फाइट देखने का भी एक बहुत मजा आएगा। Right, and at the same time, if I was Crawlers, one of the things that would be going in my head is like I would be telling my teammate, oh, there's at least 2 players here. And here's the key word, guys. Whenever you're communicating, you need to say at least, because you don't know how many exactly. But if you know there are 2, just say there are at least 2. So it could be just 2 or not. And Loki will go down to Equilibrium's Razor. And as I told you before, Equilibrium just has really good utility control, and they will take down another team. And I think the gods of Asgard will be taken down quite early in the game as well. It was not that good to see that they got taken down, but Asgard now, the people of Asgard with no rulers, and GH Jumpin will also take down Team Excuse. And I think they're going to have to find a really strong excuse to get eliminated this early in the game. It better be very strong, otherwise the teammates aren't going to buy it. We are not going to buy it if you don't provide us with a good enough excuse. Team Excuse. Really sorry about the wordplay there. It was terrible, but I hope you guys enjoyed it. At the same time, moving forward, we see no team in the blue zone as of right now. And moving down, we have team. I'm not sure which team this is. This is such a hodgepodge right now. It's yet to be understood quite clearly who is moving where. And we do see Team GH go inside the zone right now, and they will not find anyone quite soon. But let's see which decision they take. Where do they decide to, just land and take that place for themselves? I mean, all the best buildings are currently contested for, and Team 19 is also contesting for this building. But I don't think they are going to be left alone, because Team AM knows exactly where they are. Maybe they are going in for a fight, Fiqi. Ya, di sini tim 19 juga merupakan tim yang lumayan sangat bagus pada pertandingan yang sebelum-sebelumnya, dan kita melihat di sini bahwa dia berdekatan dengan tim 9 ya, tapi tampaknya tim 9 juga sama sekali tidak mengeluarkan senjata-senjata mereka untuk menembaki dari tim 19 di sini. Kita melihat di sini bahwa Alpha Man tampaknya malah menjauhi titik dari persembunyian tim 19 di sini. Kita melihat bahwa di map mereka itu sangat berdekatan, dan tim Alpha Man di sini sudah berada di atas bukit, dan seharusnya mereka bisa menembaki tim 9 pada match kali ini. Tetapi tampaknya Alpha Man memilih untuk bermain aman dan menjauhi dari tim 19. Dan mari kita lihat dari sisi sebelah kanan di sini dengan tim Green Hydrogen. Di sini tim 14 sudah memiliki 4 kill, dan pada kali ini kita sudah berada di fase kedua dengan 10 detik lagi, 17 detik lagi kita akan berada di fase ketiga. Dan pada fase kali ini kita mulai sedikit lumayan sakit untuk kekurangan darahnya. Dan kita kembali lagi kepada tim Alpha Man. Di sini tampaknya mereka mengetahui keberadaan tim 9 di bawah ini. Tetapi tampaknya mereka lebih memilih untuk benar-benar menjauhi dari pertandingan kali ini. Kita melihat bahwa tim 9 tidak ada kill sama sekali ya, belum pecah telur di pertandingan kali ini. Dan kita melihat bahwa Circle sudah memasuki ke tengah-tengah blue zone di sini. Di sini ada tim Nati juga di sini, tim 17 yang beranjak untuk memasuki ke circle, dan masih ada beberapa tim yang berada di area luar jalur circle. Kita melihat di sini ada di tengah-tengah, ada tim 10 yang berada di tengah-tengah map di sini, dan ya beberapa tim. Oh, di sini kita melihat bahwa tim 5 dan tim 11 tampaknya berdekatan ya. Tim bis. Oh, tim bis dari tadi dengan tim 5 belum selesai perangnya tampaknya di sini. Mari kita melihat pertandingan tim 3 melawan tim 5 pada pertandingan kali ini, like.
Right, and how the tables have turned. I mean, crawlers were below Team B State, and B State occupied the house. Now it's the other way around. Yeah. B State is just going to wait it out. They are going to wait there. They do have one kill, so it's respectable. It's decent for just two players. And you are unable to recruit in this one because recruitment, even though it is a staple of New State Mobile, it is one of those key defining features. Unfortunately, in competitive game, players don't really like that, and so we have disabled it for this match. But as you know, B State with just two players can't recruit, and Wiggle and his teammate here are stuck unless they are able to use some sort of utility to get more information or to attack B State. They will be unable to do anything right now. It is a stalemate, and it's not good to be in a stalemate. Ask any chess player. Stalemates are something that everybody wants to avoid. Or you could go for it if you're on the losing side, but I don't think Team Equilibrium is going to be on the losing side anytime soon, because they do spot out one player and they will take him down. At the same time, Team 17 is looking pretty bad because the vehicle has just exploded. They are out in the middle of nowhere with almost no cover to their name, and Team EQ still has that vehicle. So if they want to go for a drive-by and they try to do that, then it will be quite easy for them to do, right, Sigma? बिल्कुल, अगर वो व्हीकल लेके जाएं तो आगे हो जाएगा, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम के दो प्लेयर हम लोगों को नॉक दिख रहे हैं और साथ में टीम नंबर 17 का सिर्फ एक प्लेयर ही हम लोगों को सामने दिख रहा है और एक काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिख रहा है। और यहाँ पे बात करें न्यूटो, यहाँ पे घर के ऊपर चढ़े हुए हैं जिससे इनको काफ़ी अच्छी पोजीशन दिख रही है और दोनों प्लेयर इनके जिंदा हैं, दो प्लेयर लूज़ कर चुके हैं। साथ में टीम इक्विलिब्रियम का भी यही हाल है और यहाँ पे अगर एक ऊंची पोजीशन जब आपके पास रहती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंगल्स मिल जाते हैं एनिमीज़ को फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पे देखना होगा टीम इक्विलिब्रियम आगे क्या करने वाली है, क्योंकि टीम इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक ही प्लेयर हम लोगों को यहाँ फुली हेल्थ के साथ दिख रहा है, बाकी के एक प्लेयर तो फिनिश हो चुका है, एक प्लेयर और नॉक पड़ा हुआ है। अगर ये अपने एक प्लेयर को रिवाइव कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये 2v2 की सिचुएशन बन जाएगी जिससे वो यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 17 के प्लेयर ने यहाँ पे रश कर दिया है और गाड़ी लेके चारों तरफ नाच रहे हैं और इनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में फाइट होती है और यहाँ पे लोनली यहाँ पे नॉक कर देते हैं न्यूचो को, जो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फाइट देखने को मिली हम लोगों को और टीम इक्विलिब्रियम की तरफ से बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस था। लेकिन अभी भी टीम नंबर 17 का एक प्लेयर है और टीम नंबर 6 को अभी भी भूलना नहीं चाहिए कि खतरा उनके पीछे ही है। और यहाँ पे विपिन यहाँ पे फिनिश किए जाएंगे, फिनिश हो चुके हैं। एक दोनों के प्लेयर अब 1v1 सिचुएशन बनी हुई है और देखना ये होगा कि क्या करते हैं दोनों। अगर क्योंकि देखें तो कवर यहाँ पे लोनली के पास ज़्यादा है, आई थिंक मैं उनका अगर गलत नाम नहीं ले रहा हूँ, और यहाँ पे वो अपने लिए ओके वन एंड ओनली, और दोनों टीम आमने सामने हैं और वो कार फोड़ने की कोशिश करेंगे और दोनों ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, दोनों सेम दूरी पे हैं और देखना ये होगा कि यहाँ पे ये क्या डिसीजन लेते हैं। अगर ये दोनों जल्दी से फाइट नहीं फिनिश करते, अगर कोई थर्ड पार्टी इनके पास आ जाती है तो ये यहाँ पे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 17 के प्लेयर यहाँ पे इनके ऊपर रश करते हुए और लेकिन इनको अच्छा कवर मिलता हुआ, लेकिन यहाँ पे वन एंड ओनली यहाँ पे उनको फिनिश करते हुए दिख जाएंगे और वो टीम पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। वेल इनके पास अच्छा खासा कवर था और इतने लोगों को फिनिश किया तो ये अपनी डेफिनेटली टीम को रिवाइव कर पाएंगे, इनके पास अच्छा कैश मिल जाएगा। इन द मीन टाइम अगर बात करें टीम एम के सामने यहाँ पे टीम नंबर 19 दिख रही है और इन्होंने अपना एक ग्रेनेड किया है। अगर ये ग्रेनेड सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली हमें एक से दो प्लेयर नॉक देखने को मिल जाएंगे। At the same time, we look at team number 19 and they are looking quite good because they do have the house to themselves, but utilities, as we saw in this game, is pretty OP. Just like the name of Atrax, who kills another person. Atrax OP, Grenade OP, everyone's OP at this point. Even Crawlers are being OP by taking down B State, and I think Crawlers will return victorious against Team B State, who, they had that stalemate. It seems it was finally broken. Hijack will take down Blazing God and in the same time take down himself as well. I don't know how that happens, but that would be fun to see. Hijack, yeah, team is taken down right now. Team 9 with that win to their name. And 3 kills in total for them. They will be able to revive their teammate Brutal OP if they are able to get enough cash. And I think all of them combined, if they contribute, they definitely should have enough. In the meantime, Team Crawlers out in the open in the blue. I don't know if they have a vehicle with them. And there we go. The glitch finally happens again. I've been waiting for this for quite some time. We did see this yesterday as well. It's quite nice to see when the glitch does happen. It's fun.
It only happens when you're in spectator mode, so it would explain why most of us haven't seen that before. Because spectator mode, well, the room cards aren't really distributed yet. And give me a moment, Sigma. Will you take over? I gotta just take a sneeze, man. ऑफ कोर्स। और अब बात करते हैं यहाँ पे टीम नंबर 7 की। तो ये सिर्फ अभी तक 3 प्लेयर्स के साथ हम लोगों को दिख रहे हैं। तो एक प्लेयर के साथ जब आप लेस होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज में चलते हैं। और जंपिंग यहाँ पे जोन द्वारा फिनिश किए जाएंगे, जो कि हम लोगों को थोड़ी देर पहले नॉक दिखाई दिए थे। और यहाँ पे 3 प्लेयर सामने दिख रहे हैं और इनके सामने टीम नंबर 10 आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टीम नंबर 9 जिसकी हम बात करें टीम AM, वो भी आगे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर वो इस घर पे रुकती है तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है और इनको फाइट भी लेना पड़ेगा। और टीम नंबर 7 यहाँ पे तीनों प्लेयर दिख रहे हैं हमको सामने। और यहाँ पे टीम नंबर 9 की गाड़ी के ऊपर डैमेज दिया गया है और हम लोगों को वो प्लेयर नॉक दिख रहा है। तो डेफिनेटली इनका काफ़ी अच्छा स्प्रे रहा है। बात करें अगर जोन की, तो जोन के अंदर काफ़ी टीमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे काफ़ी टीम्स को जोन के अंदर भी आना होगा। बात करें वाच टावर की, तो वाच टावर पे यहाँ पे टीम डायोड थी, अब जो कि टीम चेंज हो चुकी है, मुझे एग्जैक्टली अभी तक नाम नहीं पता चला। तो यहाँ पे इनके टीम डेस्टिनी ई स्पोर्ट है एंड यहाँ पे ये आंधी और डैडी जिंदा हुए हैं। बाकी इनके 2 प्लेयर माफिया एंड स्वैग, ये प्लेयर आपस में स्विच कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ मैचेस में हम लोगों को मैवरिक भी दिखे थे। तो डेफिनेटली 5 की टीम होगी तो वो स्विच कर रहे हैं आपस में। तो ये प्लेयर्स हैं 2, इनको रिवाइव करना होगा बट डेफिनेटली उनके पास कैश नहीं होगा क्योंकि इतनी सारी टीम्स के बीच में कैश इतना बचता नहीं है। क्योंकि जब आप लूट करते हैं तो क्योंकि कैश वो खर्च भी होता रहता है। बाकी जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। 29 प्लेयर से लाए हुए हैं। यहाँ पे तेज गाड़ी के ऊपर यहाँ पे हम लोग को फाइट दिखेंगे। इक्विलिब्रियम के 2 प्लेयर नॉक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे टीम नंबर 11 ने जो कि है कारमेटा, उसका यूज यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिला है। यहाँ पे हम लोगों को 2 प्लेयर टीम इक्विलिब्रियम के रिवाइव होते हुए दिख जाएंगे, जो कि अगर किसी टीम द्वारा स्पॉट नहीं होते हैं तो वो डेफिनेटली होंगे। लेकिन नीचे टीम नंबर 11 इनका वेट कर रही है और साथ में जोन ने तो इनका साथ ही छोड़ दिया है। तो जोन के थ्रू वो फिनिश होते हुए हम लोगों को दिखेंगे। अगर थोड़ा बहुत वो बचेंगे तो टीम नंबर 11 उनको नहीं छोड़ने वाली है। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे टीम FY ने यहाँ पे गाड़ी से नॉक कर दिया है टीम नंबर 11 के एक प्लेयर को। साथ में 2 प्लेयर यहाँ साथ, लेकिन टीम नंबर 10 FI डैडी के पास यहाँ पे कम बुलेट थी, लेकिन यहाँ पे आंधी फिनिश किए जाएंगे तेज द्वारा और डैडी भी फिनिश किए जाएंगे। तो दोनों प्लेयर को यहाँ पे फिनिश किया जाएगा। साथ में इक्विलिब्रियम के जो विपिन हम लोगों को जोन से बचते हुए दिखाई दिए थे वो भी यहाँ पे फिनिश किए जाएंगे। So then again, Fiqi, what do you think about the game so far? Is that adventurous, and would you like to see happen? I mean, what would you like to see happen? Would you like more adventure? Would you like more gunfights? What are you aiming for? What are you hoping for? Ya, jadi kita melihat di sini tadi ada tim Equilibrium ya, dia sudah terkenok 2 dan mungkin mereka masih memiliki green flare gun dan mereka memilih untuk menghidupkan temannya kembali. Tetapi sayang sekali temannya langsung ditembaki oleh sisi-sisi kanan kiri semua, dari ujung map ke ujung map semuanya menembaki mereka. Dan di sini kita melihat bahwa masih ada 22 orang yang alive di sini dan sudah memasuki fase ke-6. Kita melihat bahwa 1 menit 19 detik lagi kita akan berada pada fase ke-7. Dan fase ke-6 ini kalian sudah tidak bisa berada di luar zona lagi. Jadi di ini Ustadz, kalian harus memastikan bahwa zona kalian itu aman. Karena dari fase 1 ke 4 itu tidak begitu sakit, bro. Dan ketika di fase ke-5 kalian sudah tidak akan bisa lagi untuk berada jauh dari zona yang aman. Jadi pastikan untuk kalian tetap berada di zona yang aman guys, supaya tidak terkejar dan tidak terburu-buru oleh waktu, tidak panik. Ketika kalian sudah berada di tengah, kalian tidak akan panik dan kalian bisa untuk mengcover teman kalian, karena mereka yang berada di luar zona akan merasa panik dan kemungkinan besar tidak akan bisa selamat kembali. Jadi kita melihat di sini ada tim True di sini, tim 14. Kita melihat tim 14 di sini, satu yang sudah down di sini. Nah, tampaknya mereka memilih untuk padahal mereka berdekatan loh. Tetapi tampaknya di sini tim GH memilih untuk menggunakan Volta untuk melindungi diri. Kita melihat dari tim TR di sini. Tim TR menggunakan Volta
meta mobil di sini memang betul sangat OP pada kali ini. Dan di sini ada Gili menggunakan bagi. Oh, nice. Tetapi sayang sekali baginya harus diledaki oleh tim TR. Also TR backup yang bagus, tapi sayang sekali temanmu sudah down 1. So Sigma, what do you think about this match? बिल्कुल, यहाँ पे कार मेटा तो चलता है, लेकिन आपको कार चलानी भी बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए और आपको कार बीच में नहीं रोकनी चाहिए, नहीं यही हाल होगा जैसा कि रिएक्शन ने अभी टीम नंबर 2 के एक प्लेयर को फिनिश किया है। आपको काफ़ी संभल के चलना होता है, क्योंकि गाड़ी अगर आप व्हीकल गलत जगह रोकते हैं और तो वो काफ़ी दिक्कत देगी अगर आप व्हीकल सही से चलाते हैं। और साथ में यहाँ पे हमको अगर फ्यूल की बात करें तो इन्होंने शायद रिएक्शन को स्पॉट किया, उनको कुछ डैमेज देना चाहते थे, बट यहाँ पे रिएक्शन नॉक किए जाएंगे। डेफिनेटली उनको स्पॉट किया था, पहली बार कुछ शॉट नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे शॉट लग गए। साथ में अगर बात करें टीम नंबर 2 के एक प्लेयर नॉक दिख रहे हैं, उनको अभी थोड़ी देर में रिवाइव मिल ही जाएगा, और लेकिन इनको काफ़ी बच के खेलना होगा क्योंकि इनके आसपास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। सामने अगर बात करें टीम नंबर 9 की अट्रैक्स ओपी इनके सामने दिख रहे हैं, और ऊपर पहाड़ी के साथ बात करें टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 10 आई गेस दिख रहे हैं प्लेयर हम लोगों को। नो टीम नंबर 14 के कुछ प्लेयर दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी जोन भी निकलना चाहिए क्योंकि जोन भी क्लोजिंग करेगा और जोन में अपनी अच्छी एक पोजीशन बनानी होगी। तो डेफिनेटली एक चीज़ मैं जो कह रहा था, यहाँ पे कार मेटा है, लेकिन कार चलाने का भी एक अलग ही तरीका होता है। आप कहीं भी कार नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो यही हाल होगा जो कि इनके साथ हुआ है। बाकी अगर बात करें तो ये टीम 2 प्लेयर के साथ है, अगर इनको थोड़ा बहुत कैश मिल जाता है तो ये अभी अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर सकते हैं आई गेस, अगर टाइम बचा होगा डेफिनेटली, बट अगर नहीं बचा होगा, साथ में अगर इतने छोटे जोन में आप रिवाइव करते हैं तो प्लेयर्स का नीचे आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोन होते हुए आगे जाएंगे छुपते छुपाते, क्योंकि यहाँ पे कोई कवर दिख नहीं रहा है। तो लाइट क्या लगता है कि ये आगे पहुँच पाएंगे कि या किसी टीम द्वारा स्पॉट किए जाएंगे और फिनिश किए जाएंगे? Well, I don't know about that, but I do know that the Zone 7 is going to shrink in soon, and we have 10 people alive, and we don't. I don't think we have any team that has complete 4 players except for team number 13, which I believe is the only one remaining with 4 players, all 4 alive. Yes, and this looks good. And as I say that, it is called the Caster's Curse. Excuse me for that. One of them will go down. Team number 7's SQ16 will also probably be able to get another kill for his team. I'm not sure, but Defcon is definitely healing up for his team. Team number 13, I am amazed to see how I said 4 players are alive and now there are only 2, and then there were 2. Definitely 7 people alive right now, and every person looks like they have a good chance of winning this one. There is no extremely strong contender for the chicken dinner here, but if SQ16 does get spotted out, he will be taken down, because I don't think Team 13 wants to take any chances here. They are definitely aiming for where that grenade came from, and GH Reflexer with that shield will be out in the open, attracting attention so that his teammate can actually kill someone here. Fuel, on the other hand, will be taken on attracts, and let's see if Fuel is able to make something happen for his team, because team number 2 definitely has potential. Foggy OP will go down from his team, and the team which had the highest chance of winning in the very beginning now only has 1 player remaining. So let's see what happens here. Most teams, 1 player remaining, 3 teams remaining, all of them with just 1 player, Defcon, Fuel, and 1 other player. So Defcon will get down. It's only SQ16 with that ghillie suit versus Fuel, and this is so interesting because we never did see this coming. We never thought that this would happen. And I think we would go into a heal battle soon. I mean, Fuel is not aware of where SQ16 is, and he will take that shield down. But SQ16, may he have moved in a bit earlier, a bit further, he would have saved himself. But I don't know why he did not do that. In the meantime, team number 2, it's your winner for the day for the final match of Fiqi AMD's international qualifiers for the Indian teams. And only I think it is only 7 teams that will be moving on to the actual scrim part, and they will be facing teams from Indonesia, Malaysia, and just whole of Southeast Asia. So that is something I'm looking forward to, right, Sigma? Do you think we will be able to see more performances such as these come in? बिल्कुल, हम लोगों को और परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। SQ16 की बात करें तो उनके पास हेल्थ कभी कम थी। अगर बात करें टीम नंबर 6 की, 15 किल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और टीम नंबर 17 3 किल्स के साथ, 12 0 किल, 16 0 किल, 4 0 किल, टीम नंबर 1 0 किल,
तो यहाँ पे काफ़ी टीम्स ने काफ़ी कम किल के सर्वाइव करने की कोशिश की है। यहाँ पे टीम नंबर 15 के 3 किल्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि है आई गेस ट्रू रिपर्स जिनका नाम है। टीम नंबर 13 के पास 6 किल हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बात करें पिछले मैच की, जिनको हम लोग रैंडम बोल रहे, नो आई गेस हाइब्रिड टीम बोल रहे थे, वो स्टार्टिंग में फिनिश की थी, जिसको हम लोग बार बार VLBT बोल रहे थे। उनके काफ़ी किल हम लोगों को 2 मैच में देखने को मिली। टीम इक्विलिब्रियम जो इस बार काफ़ी ज़्यादा वो लोग एग्रेसिव खेल रहे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किल लिए, वो भी आखिरी तक सर्वाइव नहीं कर पाए, स्टार्टिंग में फिनिश हुए, लेकिन काफ़ी अच्छे किल और गेम प्ले दे कर गए हैं वो लोग। तो डेफिनेटली फाइट की अगर बात करें तो टीमों ने ज़बरदस्त अपना प्रदर्शन दिखाया है, और कुछ अलग अलग टीमें भी आगे दिखाई दी हैं, जिनको हम लोग अगर बात करें टीम चिकन डिनर लेके आ रही हैं। और साथ में टीम नंबर 11 12 किल के साथ, तो टीम नंबर 11 भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। अगर बात करें तेज की, तो तेज की तरफ से भी ठीक ठाक हम लोगों को काफ़ी अच्छे किल्स देखने को मिली हैं। और टीम इक्विलिब्रियम यहाँ 15 किल्स के साथ है। वन एंड ओनली जो कि लास्ट प्लेयर थे अपनी टीम के साथ, जो कि आखिरी फाइट हम लोगों को वहाँ पे वॉच टावर के पास देखने को मिली, 8 किल्स के साथ आए हैं। डेफिनेटली वो जो इनका स्क्वाड वाइब था, जो उन्होंने जो गेम प्ले दिखाया, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और मज़ा भी आया। क्या लगता है लाइट, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? Right, definitely. I think one of the best teams, I mean, one of the best utilities that we've come to see so far is from Team Equilibrium. You mean, I mean, do you remember those two houses that they pushed on with Molotovs and grenades and all of that? And they managed to knock out most of the enemy team just by using utilities. And Fiqi, I don't think we have seen a lot of international teams use their utilities so efficiently, so proficiently, right? Ya, ya, ya. Jadi tim Equilibrium kali ini maksudnya lagi itu lumayan bagus pada pertandingan kali ini, dan kita lihat bahwa tim dia di sini banyak killnya sampai 15 kill. Tapi meskipun hashtagnya segitu, tapi killnya banyak karena menggunakan strategi yang baik tentunya tim mereka. Tapi sayang sekali mereka harus tidak menjuarai pada match 3 kali ini. Mengingat tim EQ pada pertandingan-pertandingan sebelumnya dan pertandingan yang baru saja dilakukan, mereka meluncurkan semacam granat ataupun flashbang yang sangat cantik dan tepat sasaran. Dan there you go. Kita akan menghitung skor pada pertandingan India setelah ini, dan aku akan secepatnya untuk memberitahukan atau memberitahukan kepada kalian bahwa tim mana-mana yang akan bertanding pada melawan tim Indonesia dan Malaysia serta Vietnam pada selanjutnya pada Scrim internasional yang akan kita gelar pada beberapa hari lagi. So, ini adalah pertandingan yang terakhir pada match kali ini, dan harus aku akui bahwa tim India pada kali ini sangat keras-keras dan tidak bisa kalian remehkan pada tim India pada kali ini, karena mereka mempunyai tim-tim yang sangat kuat, tim-tim yang mempunyai strategi yang cantik, mempunyai strategi yang baik, terutama pada pola permainannya. Mereka juga memiliki teman-teman yang sangat baik gitu bentuk backupnya. Jadi aku tetap berharap bahwa pertandingan final nanti Indonesia bisa memenangkan Scrim kali ini, tetapi tetap kalian tidak bisa meremehkan tim India pada kali ini. So, terima kasih, thanks to thanks to Atom, thanks to Sigma, thanks buat Nicholas, Azam yang kemarin sudah membantu dan tadi sudah membantu Scrim pada Scrim kami dan sudah membantu menjadi caster kami. Terima kasih buat kalian yang sudah mensupport, menonton pertandingan kali ini. Thanks, and back to you. Like, do you have any? Yeah, sure, I do actually. And since this is the last time we are going to see you
for quite some time. I mean, we do have other teams coming in from different regions, so I'm not sure if I'm going to be here or not, but I will return once again on this channel soon. But till then, thank you guys so much for hearing me out and for giving us this opportunity to present to you these scrims, these international scrims, and thanks to Fiqi for hosting these things. I mean, she took the time out of her day to make sure that everything is running smoothly. And you just see this, but behind the screen, behind the stream, there is so much work going on. There's actually a lot of work going on, and when it goes smoothly, it is just so exciting. It is just a pleasure to witness all of it, like a very smoothly oiled machinery just taking place. So it's been a fun experience being your caster. Joining me today is also Sigma from Sigma Plays. My channel is Lightcast, so definitely feel free to check it out. And I would also like to thank Atom, who was here casting for the past couple of days. Yeah. I think he casted for like 2 days, and he has been quite good at it. Also, I believe we had Azam and we also had Nicholas. So both of them from this representing their own countries, and they were really good people. They were fun people to be around, and we joked quite a bit behind the scenes. So if you want to know more about that, you can also look at their socials, which will be mentioned in the server somewhere. So definitely find it if you want to know more. But yeah, thank you so much. This was the Fiqi AMD's international scrims for the Indian teams, and we will be coming back more with other teams as well. So signing off for today, my name is Light. Take care and have a good day. Before we finish though, Sigma, what do you have to say? मैं हमेशा एक ही बात कहता आया हूँ, जो भी लोग आपका एक फेवरेट गेम है पबजी न्यू स्टेट या हम कहें न्यू स्टेट मोबाइल, और आप चाहते हैं कि ये ग्रो करे और ये जाए, तो जो लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं, इसमें जो एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आप तो देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रिम्स, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क होता है। लाइट अपने जगह से बैठ के कास्ट कर रहा है, मैं यहाँ से, फीकी अपने कंट्री से और साथ में कंट्रोल कर रही है, और इतना सारा वर्क साथ में हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है। तो ये एक इजी टास्क नहीं, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, या जो भी लोग इस गेम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये गेम ग्रो हो, तो डेफिनेटली सबको सपोर्ट करिए। जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो सभी को सपोर्ट करिए। लाइट के चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को, फीकी के चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हों, कि ये लोग इसके लिए गेम के लिए कर रहे हैं, और हम भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं, और थोड़ा थोड़े सपोर्ट से एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है, जो कि इस गेम को आगे ले जाएगा, आपके फेवरेट गेम को आगे ले जाएगा। तो डेफिनेटली सबको सपोर्ट करिए। और हाँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फीकी का, जिन्होंने हम लोगों को मौका दिया, मुझे कास्ट करने का, यहाँ पे लाइट को मौका दिया, अपनी इंडियन टीम्स को मौका मिला खेलने को, परफॉर्म करने का। तो सभी की तरफ से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बाकी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी इसी तरह कभी और किसी और तरह मिलते रहेंगे हम लोग आपसे। So, thank you guys yang buat kalian semua yang sudah nonton, support. Aku akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.